Hey guys, welcome to the Film It podcast. Today we have Mitul and Vignesh with us, and this is the episode 2 of our podcast. Today we are going to dive into a lot of stuff and majorly Marvel. Marvel के बारे में बहुत बात करेंगे क्योंकि एक तो सीक्रेट इन्वेजन एंड हुआ है एंड लोकी का ट्रेलर भी आया है. तो पहले सीक्रेट इन्वेजन के बारे में बात करते हैं. तो मेरा before we start anything, are we not gonna address that Miss Marvel का भी ट्रेलर आया था? नहीं एड्रेस नहीं करना. The Marvels, the fact हाँ, that The you Marvels. don't Oh my remember god! the names. See, it is so forgettable. I don't even know the name. एवरीथिंग मार्वल इज फॉरगेट. तो स्टार्ट इट ऑफ एक मेजर चीज थी जो मैंने बहुत ऐसा ऑब्जर्व किया था कि इज द कंपैरिजन ऑफ मार्वल फैंस विद द स्टार वॉर्स फैंस. तो स्टार वॉर्स फैंस का मैं ये नोटिस करता हूँ कि दे आर ऑलवेज नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओरिजिनल ट्रिलॉजी एंड जो Fair भी enough. लोग देखते हैं दे जनरली हेट एवरीथिंग दैट हैज कम आफ्टर दैट. तो मेरा ऐसा है एक फोरसाइट है कि बहुत सालों बाद जब हम ऐसे 40 इयर्स के हो गए होंगे तब हम ऐसा सोचेंगे कि एंड गेम तक हमारा ओरिजिनल ट्रिलॉजी था एंड उसके बाद एवरीथिंग गॉट. I think we still feel the same way. हाँ वही फोरसाइट की बात ही नहीं है अभी चल रहा Foresight है नहीं, वो present है. प्रेजेंट है वही. बाय द वे आई नीड टू एड्रेस वन थिंग. मैं और आमिर मतलब हमको सीक्रेट इन्वेजन इतना इम्पैक्टफुल लगा कि हम दोनों स्क्रल्स बन गए ऑलमोस्ट. बहुत साले कुछ तो रिएक्शन सिविल वॉर से स्क्रल्स थे. सिविल वॉर से स्क्रल्स नहीं यार. बट अरे आई वाज वेटिंग फॉर मतलब द पॉडकास्ट टू स्टार्ट फॉर दिस. गुड रिएक्शन. You want my reaction on this? सीक्रेट इन्वेजन काटो ये इस पार्ट को काटो. You want my reaction on this? Of course that. You know what? Because तूने mention कर ही दिया है ना. I want to start off with what do you guys think of the Rhodey reveal? यार आई डोंट नो मतलब No. हाँ. और ये ऑफिशियल न्यूज़ है क्या? आई डोंट रियली नो. मतलब केविन फाइगी ने ऑफिशियली बोला है ये चीज क्या? They put it in Are a you show. guys- What more do you पर want? क्या बोला कि है? सिविल वॉर से रोडी हैज बीन No. No. That is not official news. No. नहीं ना. ना. हाँ क्योंकि Bro, हाँ. please. नहीं बोल. Nothing. नहीं I'll मतलब start आई anything. heard about it and मुझे तो यार सीरीज में कुछ क्लियर ही नहीं हुआ. रोडी कब स्क्रल बना, हाफवे स्क्रल बना, स्टार्टिंग में स्क्रल था. Until the last part. Until the last part. लास्ट पार्ट में इट वाज पहले तो- एविडेंट बट But हाँ. see, they did not want to cheat the audience as well. कि जो पहले जो अच्छे काम किए एंड गेम तक जो अच्छे काम किए थे उसको डिसमिस नहीं करना. कि एंड गेम में ही वाज अ वेरी पिवटल कैरेक्टर. तो मुझे ये था कि see that was Marvel not being bold as well as even if they were bold enough to do that, it wouldn't have been fair to the good characters that we have because उनके कैरेक्टर आर्क्स अच्छे थे. रोडी कैरेक्टर आर्क्स नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट. रोडी का इन एंड गेम कैरेक्टर आर्क नहीं बोलूंगा बट ही हैड अ गुड कैरेक्टर. लेट्स से दैट. बट Where? एंड गेम Oh, Endgame. Okay, I thought you're talking about. he Secret played a Invasion. very important part after Yeah, Civil of War. Civil War में उसका हाँ yes I may agree with Amir because Civil War में although Civil War में he was a important plot device to take the plot forward, narrative forward instead of him being a character. मैंने भी विगू को भी एक दिन बोला था there are 3 types of characters. एक who have their own arcs, second characters who help the protagonist to achieve their arcs, and third are plot devices. या Absolutely. ये story आगे लेके जाते. तो True. I guess he was the second one because he helped Tony Stark का arc achieve करने में उसको help किया था उसको. देखा जाए because of the fact that he fell it switched to Tony Stark. Right. Anyways, having said बोल. I still am not clear from where to where did we have I am the getting original there. Rani. Yeah, I wanted to ask you that. नहीं please. after Endgame. It is after Endgame that yes of course When because exactly? after Endgame everything is so ambiguous. Falcon and the Winter Soldier में भी है क्या फिर भी? That's question. होना चाहिए Exactly. because होना चाहिए. Falcon and the Winter Soldier happened in 23 in the MCU time, right? 23 Yes. 24 no? नहीं? और 2018 के बाद 5 years skip हुआ. उसके बाद 23 के नहीं, अक्टूबर में 24 Battle of Earth हुआ था ना? 24 में हुआ. अभी ये शो 25 में हो रहा है.
तो मे बी कंसिडर कर सकते हैं. ऑल्दो आई सी स्क्रल्स का तुमको अगर रिवलेशन देना है, हाँ, तो यू हैव टू सेट इट अप. तो आप एक एपिसोडिक स्टोरी टेलिंग का आपके पास टूल है. आप शोज इतना एमसीयू के इतने शोज और मूवीज है. They could have built it up to Secret Invasion. They could have done. Well, see, my biggest gripe from the show is, yeah, the show involving Skrulls doesn't have any form of tension, suspense, and एक कुछ वो है ही नहीं कि if I can trust him or her. कुछ है ही नहीं. It's everything is so surface level and face value पे. So having said that, drifting to the point. विगू को ये मेरे हिसाब से तो ये है कि आफ्टर एंड गेम ना कुछ टाइमलाइन पता ही नहीं किसी कोई ऑडियंसेस को ही नहीं पता है. मैं तो बोलता हूँ जो क्रिएटर्स है उनको भी नहीं पता. केविन फेगे भी कंफ्यूज हो जाएगा एक सेकंड. तो आई डोंट नो हाउ गुड आई फील अबाउट इट, बट ठीक है. बट यू सी आफ्टर वाचिंग द शो अब तो आई डोंट इवन हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि इनको खुद पता है क्या चल रहा है उनकी कंपनी. Fair enough. मतलब as much as it hurts me saying this, but it's You the said hurt truth, ना. 4 times, bro. I get that. अरे मैं hurt या hurts में confuse हो रहा था. I get how much you're hurt. हाँ यार. चलो Amir. हाँ तू बोल ना. विघ्नेश कुछ बोल रहा है. thoughts level initial thoughts on the entire show, or do you want me to just talk about तो it? गाली देना एक दो गाली दे दे बस उसके हेडलाइन हो गया. उसके बाद चलो. I remember मितुल और मैं before Secret Invasion like was coming out, हम लोग कॉल पे थे and we were talking about this and like bro Secret Invasion आ रहा है. It could be something great. It could be कुछ अच्छा तो होगा. See, It could have been. नहीं मैंने पहले बोला था कि हो सकता है बट बाद में I dismissed it. हाँ उसके बाद I After the saw first another episode. trailer. Then Yeah. I texted you. Like this might be something big. This might be MCU's comeback. बाद में Fair. after the second episode इसने मुझे कोई शो के लिए टेक्स्ट किया या कुछ तो. Then I replied कि यार Secret Invasion के साथ भी यही हो गया था. छोड़ो यार. No, I texted you about Barbie. Barbie का trailer आया था and I sent it to you. And I was like, bro, this could be great. And you're like, we said the same about Secret Invasion. हाँ. Super But fun. Barbie turned out to be big. Barbie turned out to be great. God gives Good. us in parts. मतलब Not the point. If you are talking about the MCU gods. Let's not get into that debate. Why MCU gods is the bigger question right now, but not the point. The show, I would say, for the story that they had, it felt very secluded, very small. I don't know why, even the feeling of it, even the scale of it. And you know the thing you said, कि वो stakes लगना चाहिए if I should trust them or not trust them. The entire last episode, Nick Fury was a Skrull, played by the Gaia character, right? That is what the name was, right? Right. Yeah. And did not feel like it, which works in the story, but at the same time, अगर Nick Fury जैसा character Skrull था, तो the audience should like have that. Doesn't even Thing. feel in the मतलब पर story में भी it doesn't make sense. It's a story about it. The pure protagonist is Nick Fury and उसका आँख है ही नहीं. मतलब until you count कि उसकी जो wife के साथ ही takes, although उसकी wife का character is so rushed. मतलब third episode में they introduce it and 3 episode में how do you expect me to feel for her or feel for their relationship? Yeah, and feel तो दूर की बात है. इस Exactly. एपिसोड पहले 5 एपिसोड है ना, आई वाज लाइक मैं क्यों देख रहा हूँ. मतलब व्हाई. मतलब छठा एपिसोड वाज सच अ क्रिंज फेस्ट. मतलब by the way this is a spoiler discussion guys. I think that was pretty given in the last episode. I don't know if we should give a spoiler disclaimer every time. नहीं but who knows. Anyways, so Fair last enough. episode I मतलब my eyes were bleeding ना, तो again exaggeration भी नहीं है. मतलब that was a point. See मेरे अभी 2 shows है जो I have hated मतलब see not just MCU shows ever or any television or web show ever. That is one is this yours truly अपना Secret Invasion and She-Hulk.
दोनों यार मैं I रिग्रेट so कर रहा knew हूँ you were मैं gonna say that. I so knew मैं you were इतना gonna say रिग्रेट कर रहा that. हूँ मैं और आमिर अभी ग्रीन क्यों पहना है हेलो यार बट शी हल्क का एक डिफरेंस है कि शी हल्क न्यू व्हाट इट वाज गोइंग फॉर, वो बहुत सेल्फ अवेयर था. आई डिसएग्री तो हाफवे थ्रू इट मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बट आई देन गॉट इनटू इट, आई गॉट व्हाट दे वर काइंड ऑफ डूइंग. बट यहाँ पे तो यार यू आर टेकिंग सच मेमोरेबल कैरेक्टर्स, निक फ्यूरी जैसे कैरेक्टर को लेके, जिसको पता है एंड गेम के बाद आई वाज रियली वेरी 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 वरीड अबाउट हिम, बिकॉज उसके साथ क्या करेंगे. एंड उसको फार फ्रॉम होम में यूज किया, फिर वो स्क्रल वाला बताया ठीक है ये कहीं तो चिल कर रहा है. देन आई डोंट नो, मतलब नहीं बट द इंटेंशन वाज राइट कि दे गेव अप निक फ्यूरी देयर ओन शो. मतलब ऑन पेपर दे आर टेकिंग एवरी बॉक्स, बट एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब दे कांट बी फार ऑफ सो फार ऑफ फ्रॉम द रियलिटी. जो मतलब उन लोगों ने पहले इंटेंशन था उनका जो दे कुडंट हैव बीन फार ऑफ. So, and having said that, Nick Fury का जो आके I mean, उसके कैरेक्टर में ही सेंस नहीं बना. First of all, कि वो he take in the show they say कि snap had an effect on him because of which he thought he did not have control and he left, right? तो उसका when he comes back, we hear he is a broken man, he is not Nick Fury anymore. And ना तो हम visually देखते हैं कि he is not Nick Fury anymore, ना तो कैरेक्टर का रिडेम्पशन आर्क होता है ना कि ही इज गेटिंग बैक टू हिम, ना तो हम उसका रिडेम्पशन आर्क देखते हैं, सिर्फ सुनते हैं कि निक फ्यूरी इज बैक, निक फ्यूरी डिड एवरीथिंग एक्सेट्रा. वी डोंट इवन सी मिस्टर संडे का मूवी, मिस्टर संडे पॉडकास्ट का मैं आज देख रहा था, तो ही सेड उसमें उसने दो बिट्स बोले थे निक फ्यूरी के. वन वाज द कार्स चेस जिसमें ही मतलब ही पोक्स द होल ऑन द ग्राउंड एंड एस्केप्स वो, और दूसरा फर्स्ट एवेंजर्स में बजूका लेके ही फायर्स. I mean these are Nick Fury moments. At the same time comics में अगर देखें Nick Fury is an anti-hero. He's not a hero. And in this they could have played with him कि अगर see Skrulls को they could have told मुंह पे कि he's manipulating the Skrulls. मतलब he was never meant to give them a home. मतलब एक तो they did not address it कि उन लोगों ने बताया कि मैं देख रहा था फिर देखना बंद कर दिया. एंड कोई भी स्क्रल्स अगर मैं भी होता तो मैं भी इसके अगेंस्ट जाता. ये क्या बेवकूफ आदमी है. मतलब हाँ. The same thing I want to add on to this. It's like they tried so hard to make him look like an anti-hero for the first time, but it did not travel through. I did not feel like nothing. It just exactly. It did not feel like it because like in the entire 6 episodes there were so many moments where they made him look like कि हाँ भाई this guy is not like being the guy he used to be. He manipulated the Skrulls, he used them, ये वो दिखा रहा है ठीक है, but I don't know, it did not feel like it for some reason. वो शो का जो as you said on paper जो दिखना चाहिए था, जो feel होना चाहिए था, we don't feel like it. And as you said वो end में जो भी दिखा रहे हैं ना where he goes and tells Gravik कि I was using you, I never, it was Gaia all along. So Nick Fury ने खुद तो बोला भी नहीं है वो. So like what the fuck. And I was hoping कि Nick Fury और टेलोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्रक्स है पूरे शो का. And I was hoping for although it was ऐसा लग भी रहा था but it didn't pay off. Still not convincing enough. Exactly. And they killed him off ऐसा. नहीं, they should have killed more characters. Well, that's a different debate. But every character, मतलब Emilia Clarke is Maria Hill भी मर गई. वो तो ठीक है. Emilia Clarke is one. But that was good ना. मैं पता है first episode के बाद थोड़ा optimistic था because of the fact I think they are trying to build stakes, which is why I was happy after the first episode. मुझे 2 episode लगे so पता चलने में ये show बेकार है. पहला episode में I was convinced कि हो सकता है, could be onto something. But having said that, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Samuel L. Jackson, ये तीनों एक piece of paper है ये show मेरे लिए. In terms of there are no expressions to any characters. I can't feel for any characters. Emilia Clarke is doing nothing in the show. She's one of my favorite actresses ever. मतलब वो सिर्फ उसका एक ही expression पूरे show में. And I am not a critic. मैं किसी को bash करना नहीं intention मेरा. I am just a fan who's dissatisfied, who's frustrated. And I think that's all of us. But frustrated because of the fact कि जो talent involved है वो इतना हाई कैलिबर का. मतलब इवन आई वाज द सेम थिंग हैपेंड विथ मी
फॉर थॉर लव एंड थंडर कि जो टैलेंट आपने लिया है, रिक्रूट किया है, दोज आर सच अमेजिंग पीपल. मतलब आफ्टर, मतलब हाउ कुड यू स्क्रू इट अप? मतलब even secret invasion on paper, it ticks off every box, literally every box. Secret invasion comics makes one of the biggest story. You have Nick Fury, Nick Fury as a character, he may not be the most powerful character, but as a क्या कहते हैं actor, Samuel L. Jackson का जो pull है, very मतलब MCU में बहुत कम लोगों को, मतलब if you compare it to the previous MCU shows, लोकी हो गया, लोकी में भी टॉम हिडलस्टन ठीक है, पर मिस मार्वल हो गया, शी हल्क हो गया, दे डोंट हैव कैरेक्टर्स की रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स नहीं है. एंड उसमें एमिलिया क्लार्क, ओलिविया कोल, ऑल्दो माय only good character I enjoyed watching on screen was Olivia Colman. Bro, beautiful. I mean, although she played the same role that she plays in every movie. कि quick-witted British woman who क्या कहता है, who bashes every dominant male. So Yeah. but even so वो torture sequence था ना, it was lovely. When they go to that was bakery. good. Yeah, That it was was- good. I love that sequence in the entire show. Like that is the one thing that I will watch again. It was good. It was not bad. At the same time, Yeah. adding to it, मुझे ऐसा लगा ओलिविया कोलमैन का कैरेक्टर मुझे इसलिए वो लगा because every scene she was in, she was turned up. मतलब वो अपने जिनके साथ भी interact कर रही है, she's a level above them. And she's played it in a way, she's very witty, to be very honest. That's it. Character में one thing I have मेरा सबसे बड़ा gripe with this and all the MCU shows is कि these are not real people. उनकी मतलब real people मतलब सिर्फ उनके मन में प्लॉट चल, मतलब ये मिशन है, इसको मारना है, वो हो रहा है. नो कैरेक्टर्स ब्रीदिंग, नो कैरेक्टर, मुझे पता ही नहीं दिन में क्या करता है. हाँ, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में इंटरगेट कर रहा है, बॉम्ब रोक रहा है, ये हो रहा है. मतलब I don't know these characters. I just see plot devices. No character has a character. Ethan Hunt, Mission Impossible में you've known him for 6 years, 6 movies before, so it helps. But जैसे Tony Stark is a perfect example. We know his personal life A to Z. हाँ, उसके व्यूज हमको पता है, उसके पॉलिटिकल व्यूज क्या होंगे, उसके फूड का टेस्ट क्या होगा, हमको आइडिया है. That is why we relate to him more than the other characters. यहाँ पे we don't know. यहाँ पे सिर्फ Nick Fury आता है, he is not happy. We don't know why he is not happy because अचानक से 5 साल के 30 साल में कभी भी नहीं जा सकता था स्क्रल्स के टेंशन में. अचानक से एक तो दुनिया हर शो में खत्म हो तो यार और कुछ तो डायलॉग राइटिंग में भी ऑफ था ये हर चीज वेरी इट वाज वेरी ऐसा स्ट्रक्चर्ड एंड अनइमेजिनेटिव पता नहीं, मतलब डायलॉग राइटिंग में इनऑर्गेनिक सिर्फ हाँ कुछ सीन्स थे जिसमें वो लोग के पास कुछ एक्सपोजिशन था नहीं, तो they got a chance to play with that. Although I disagree, but मेरे को पूरा शो एक्सपोजिशन ही लगा. मतलब सिर्फ एक्सपोजिशन ही दे रहा है हर चीज, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये होने वाला है, ये करेंगे, वो करेंगे, खत्म. There is nothing मतलब in their मतलब own ways. मतलब Nick Fury as a persona और Nick Fury जो कैरेक्टर है वो ऐसे बोलेगा चल मेक सेंस, ठीक है, बट वो लोग क्या बोल रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना. तो दैट फेल्ट वेरी, एज यू सेड, वेरी ऑफ कि वर्ल्ड इज वेरी ब्लैंड. वर्ल्ड बिल्डिंग अब कम ऑन यार, स्क्रल्स के ऊपर शो है, यू स्पेंड $200 million ऑन दिस शो. मतलब एंड मतलब हाउ $200 million में शोज कौन से बने हुए, उससे कम में बना है, मैं बताता हूँ. हाउस ऑफ द ड्रैगन last एक साल. Wait, how much was it? What, House of the Dragon? House of the Dragons. Less than 20 or at par. Yeah. Just imagine their world with Secret Invasion. Yeah, exactly why I was like, what the fuck? And The Last of Us. Again, Last of Us. मैं बोल रहा हूँ ना, HBO is on a different league. मतलब I know. Different league मतलब चलचित्र टॉक्स में the guy says कि एवरी मतलब एक HBO शो तो लाइफ में चालू होना ही चाहिए, नहीं शॉर्ट रहती है, which is something I totally agree.
But having said that, तुम लोग बताओ, काली तो सीक्रेट. I was coming to one thing you said. I really won't be surprised if they just show up and say कि हाँ secret invasion तो setup था इसका. I really won't be surprised because वो as a standalone show देखने का point नहीं है bro. See, Marvel is one thing good about Marvel is they accept. कि, because of the fact कि MCU का Infinity Saga था, although every film was leading towards something, every film is as a whole is a complete movie, tells a good it is a complete movie. If you don't watch आगे का पहले का, you'll understand the film and you'll like it. Exactly. MCU यहाँ पे भी they are doing the same. वो अभी उनका इंटेंशन ये था कि ये कुछ बड़ा करेंगे, एंड बड़ा इन द सेंस जो ये शो के साथ उनको करना था, इट वाजंट सपोज टू सेट अप, इनडायरेक्टली कुड सेट अप, बट नहीं हुआ. मतलब अगेन तुमको क्या लगता है व्हाई इट फेल्ड? मतलब वी ऑल नो इट फेल्ड. हाँ, इट फेल्ड मिजरेबली. अभी रॉटेन टोमेटोज में 56% एंड लास्ट एपिसोड पे 8% है. I mean, wow. Lowest तो ठीक है, पर 8% and people are sensible to give it. मतलब imitate नहीं, मतलब only 8% of the people liked it. वो 8% कौन है पता नहीं, but no. But so I like, you know, one thing that kind of bugs me a lot, because it's like this show is supposed to give you like trust issues over, like, you know, the whole concept of Skrulls taking over. It's supposed to give you trust issues over everything, and we did not see, like, except Nick Fury, of course, we did not see any of the previous well-known characters. अगर कोई ऐसा character आता ना that we're emotionally invested into from like before. Again, Rhodey था, but it did not feel like it for some reason. I don't know the explanation why. But I don't know, more characters should have been there. Rhodey, first of all, Rhodey is the only character जो he's not in the A-list of characters, and उनको आप अगर स्क्रल बनाओगे ना, you'll form a major distrust, और distrust भी नहीं, वो एंटी हीरो उनको, वो they were not bold enough. Rhodey was the safest choice उनके लिए. देखा, there is no safer choice than Rhodey. मतलब he's a very mortal human being, मतलब in a very polite way. Having said that, Rhodey का कैरेक्टर तूने जो बोला distrust की बात की, the biggest thing is Rhodey तुमको फर्स्ट एपिसोड से पता है स्क्रल, because of the actions that he does. I watched the second episode and I was talking to, I don't know if I was talking to you or I was talking to a friend. इतना तू मुझसे इतना बात नहीं करता. ये लाइव बोलने की जरूरत नहीं थी. So I really don't remember. I think I was talking to some friend and we were like कि यार ये Nick Fury का और इसका conversation देखा, is he a Skrull? It very evidently feels like he's a Skrull, and I'm like, you know what? Maybe I'm just bluffing. Episode 4 या 5 ना? I don't. Skip to that and reveal. I'm like, fuck. Why did I know this? इतना obvious था. Obvious. See, overwriting है, because you can't set it up properly in a way कि subverting expectations हो ही नहीं रहे इनसे. मतलब क्या कहता? Having said that, मुझे I still can't wrap my head around कि how did, मतलब, right, see, they had all the money, all the resources, everything in place. Is it lack of direction, top level पे? Kevin Feige has too much on his plate, maybe. Is it that, or base level पे सब लोग? It could be the actors and writers strike as well. That happened. This show got shot in November last year. खत्म हो गया. I don't really know what the timeline. Yeah, production. I'm just making a guess. Okay. But anyways, point last year wrap हो गया था. Oh right. VFX took 6-7 months and what? Interesting. Okay. But तुमको क्या लग रहा है? I guess Kevin Feige has too much on his plate. जैसे तुमने बोला. I guess वो जो भी सीरीज जब से शुरू हुए, मुझे एक भी सीरीज ढंग का नहीं लगा अब तक. Except Loki. Except Loki. See, I loved it, but Loki is very divisive. But Loki, as I've listened to so many opinions, उसके बाद I formed an opinion कि it is a divisive, and why also I understand. Let's get to that later, but Amir, continue. वो Loki पे हाँ, but
एक्सेप्ट फॉर व्हाट इफ मुझे बहुत इमेजिनेटिव और बहुत अच्छा लगा. मे बी वो नॉस्टैल्जिक क्वालिटी था उसमें. बट I उसके disliked अलावा What If थोड़ा. I I disliked What If. enjoyed it. I enjoyed it, but I disliked it because of the fact कि यार स्टेक्स चले जाते हैं. आपने पूरा 10 साल एक चीज पे बिल्ड किया, उसके बाद तुरंत बोलते हैं ये नहीं, कोई ये भी हो what सकता if था. का वो पॉइंट ही नहीं था ना. What if का What If का was point ही ये था बल्कि. on हाँ, building हाँ, those exactly. characters. वो कैरेक्टर्स का एक अलग एक और उसमें डीपर जाना. Although characterization. What If देखते देखते टाइम I felt a few things कि जो भी कैरेक्टर्स है ना are very off character. मतलब जैसे थॉर का कैरेक्टर फॉर एग्जांपल, he is playing an older version of himself, whereas हमने उसका पूरा आर्क देखा. और Right. we know of Thor as post Ragnarok, post Endgame का Thor, we know him as a different person. Then एक एपिसोड आता है जिसमें he comes to Earth and वो कौन सा एपिसोड था जो पार्टी करता है. पार्टी करता है. बट हाँ. दैट वाज शोइंग द नहीं my point Thor 1 वाला Thor. point being every character मुझे ऐसा लगा. टोनी स्टार्क भी he is not an evolved person मतलब in that show. हर almost every character. अल्ट्रॉन जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में था उसका 10x इसमें था, which is a good thing, but off character. Yeah, I मुझे mean again, that was kind of the point of it, no? again that is मेरा point उसमें ये है as an audience. Yeah. we've known someone. See, मैं अगर अभी मैं तुम दोनों से बात करूँ, अचानक से एक दिन तुम लोग आके एकदम अलग तरीके से बात करने लगोगे, so as audiences, as a listener, you will feel something off. So that was my first impression. I loved how bold it was first. Yeah. How bold it was, how imaginative it was. I loved that. I also loved that they culminated the whole story because they brought every story together and that was good. उसका अच्छा payoff दिया था last episode. That which was good. That was my favorite part, but at the same time I dismissed it as कि MCU नहीं है, ये MCU के बाहर की ये spin-offs है. Spin-offs नहीं है, alternate what could have been. That's it. Yeah, that was the point, na? That is why What If. Exactly. But you know, I have one view on it. So, like talking about shows like Miss Marvel. ठीक है. Again, as you said, it is not the MCU. ये वो ठीक है. But for me, I kind of enjoyed Miss Marvel. I'm not saying it's the best show. I liked it. It was chill. I'm talking about the whole show. See, except a few flaws. So मुझे मिस मार्वल में क्या था कि एक्सेप्ट द पार्ट कि जो वो जाता है कॉप्स एंड जो भी एक्सटर्नल प्लॉट चल रहा है ना कि जहाँ पे अथॉरिटीज इन्वॉल्व है या जो भी इन्वॉल्व है, दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो घर के डायनामिक्स है एंड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्वल, हर पर्सनल स्टोरी वाज फार मोर एंगेजिंग एंड वेल डन. मतलब वेल डन, इट वाज वेल डन. It was. Writing point of view से, world building point of view, everything was on to the point. And to be honest, Himan Villani is one of the best castings. मैं तो ये भी बोलूँ. True. And she's personally a very big fan of yeah. She wrote a comic as well. मतलब वो comics भी लिखती है. Yeah. She's a fan of the character Miss Marvel. Miss Marvel नहीं. Brie Larson. Captain Marvel. हाँ, Captain Marvel. Brie Larson. I don't know if this is Marvel fatigue, but I forgot the name for a minute. नहीं बट मेरा यही सेम चीज ना लोकी के साथ भी होता कि लोकी का पहला एपिसोड आई लव. उसके पहला एपिसोड तो ऐसा था कि मैंने वो एक ही हफ्ते में 3-4 बार देख लिया था. मैंने तो वीडियो वगैरह बना दिया था. मैं एकदम खुश था कि भाई ये लोग पूरा वो टाइम ट्रैवल को लेके क्या बनाएंगे. यार टाइम ट्रैवल मेरा फेवरेट जॉनर है हमेशा. मतलब मैंने सब चाट लिया. तू कोई भी टाइम ट्रैवल मूवी देगा मैं बता दूंगा कि क्या होने वाला है आगे. Nice. यार क्या उसके बाद लोकी के पहले 3 एपिसोड्स ठीक थे. हमेशा 4th या 5th एपिसोड से ना कुछ भलता ही होता है इनका. वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी पहले 2 एपिसोड्स ठीक थे, उसके बाद कुछ अजीब होने लगा. मिस मार्वल में भी सेम चीज हुआ. पहला एपिसोड इतना अच्छा लगा मुझे, मैं वो हफ्ते में 3-4 बार देखा. इतना एंजॉयबल शो बना रहे हैं, इतना उसके आगे पूरा वही कॉन्वोल्यूटेड बना दिया सब कुछ. एंड आई डोंट नो, मे बी दे वांट टू टाई इन एवरीथिंग, तो इसलिए नहीं आई एग्री क्योंकि कॉस्ट पे डोंट रूइन योर स्टैंडर्ड. सी आई सी द फ्लॉ. मुझे क्या लगता है कि केविन फाइगी हैज सेड इट प्रॉपर्ली कि they see the shows as a 6 episode movie. So in that movie structure, जो 5th और 6th episode है, it's building towards something and a climax, etc. Yeah. 4th और 5th episode, sorry. So that could be a reason कि जो structurally
it fails. This is just a hypothetical mind में build कर रहा हूँ, but it could be a different reason. Having said that, again personal thing, I loved Loki's last 3 episodes. हाँ, see मेरे लिए मुझे थर्ड एपिसोड आई डिसलाइक, वो जो ट्रेन का जर्नी है, if you remember. लैमेंटिस वाला I don't know हाँ the वही place. द ट्रेन में डांस सीक्वेंस होता दोनों का वो हाँ हाँ, अरे वो भाई मेरे को तो वो बहुत बढ़िया episode- लगा. वो अच्छा था, but no, it was a filler episode personally. हाँ. Having said that, Loki का finale is by far my best favorite finale MCU कोई भी shows में से. Yeah, same. Having said that, it's building towards something. When I watched Kang appear on screen for the first time, I was legit jumping out of this. It But was वो हम थे ना, और जो नॉर्मल ऑडियंसेस था उनको पता ही नहीं है क्या है कुछ see, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं see था. उसमें I'll give you two things. I'll give you two things. कि उसमें अपने ने ओपनहाइमर के टाइम भी अपने बात की थी कि sometimes you lure your audiences in, make them work hard. Once they work hard and then if you give them the payoff ना, वो payoff इतना enriching हो जाएगा. And at the same time वो payoff नहीं भी हो, हाँ तो भी it's not a bad episode. It's yes, it is a lot of exposition, etc., but it is establishing stakes in terms of the entire in context to the entire MCU. जो stakes establish कर रहा था, he was meant to be the next Thanos, which is now very questionable. I'll get into that जब अपने लोकी की बात करें. Yeah. कि what's the future of Kang and Jonathan Majors? No, वो Jonathan Majors का मुझे नहीं पता. Kang की बात कर सकता है, not a critique, but having said that, यार हाँ, this could be a reason. 4th और 5th episode, यार I don't even remember Secret Invasion के 4th और 5th episode क्या, सच बता. So see that it's a very pointless show. Pointless show in terms of it's a very forgettable show. You don't. It is. I'm not kidding. I don't remember anything of the show. मैं अभी देखा है this is the last MCU show we watched. At the same time, मुझे Loki although I watched it twice or thrice. Even I watched it 2-3 times. हाँ तो so I remember it. Even WandaVision I remember it अच्छे से. I don't remember उसके- the crux and stuff. I know मोटा story याद है. WandaVision was, to be honest, too much expectations from our part. There's a community filmmaking नहीं, Marvel community. Marvel, But yeah. उसके अलावा it was a good show. Something new, हाँ, something new और Although मैं Marvel को उसमें मना नहीं करूंगा. In each and every show they have tried different things. Every show. Yeah. हाँ, Absolutely. उसमें मैं मना नहीं करूंगा. Although they failed miserably. ठीक है, failure is not a problem. Like I it is like never it. a problem. Exactly. Even I love it. But point Exactly. being, if you try something new, do it. Give your 100%. दिख रहा है कि they did not give it their 100%. That is the Fair. reason कि it's failing. Secret Invasion is a very half-baked show. I don't even know कि how it got to a stage कि stream करता. मतलब post में पता चल जाता है कि क्या बन गया. You know what? I still have to give them like credits. अभी ये थोड़ा personal opinion या experience I could say. The entire show was very blah 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 until like the last episode where Nick Fury is in the Russian headquarters and he is going after Gravik, and then this chick calls Rhodey and be like, Nick Fury is after you, and वो पूरा chase चल रहा है मालूम है intercuts में. And I really did not expect that switch कि Gaia could be. I wasn't expecting it for some reason. And then Gaia का reveal हुआ that she was Nick Fury, and then Nick Fury का reveal हुआ that he was at the hospital. I'm like, oh, okay. अच्छा one last time. episode की बात. Last episode की बात कर रहा हूँ. नहीं. I'm like, oh, nice. I know. Okay. See, I did not know कि it would be Gaia, but I knew कि Nick Fury is behaving very bad. And you also knew कि he is going to get away. How we don't. No. He was going to get away. But that's the point, the na. Taylor. No. That's the point. That's the point of the entire MCU or of any show. कि जब आप stakes क्यों नहीं है? Because हमको पता है he is going to get. How stakes कम बढ़ेंगे कि इसको कभी भी मार सकते. Nick Fury कभी भी टपक. वो क्यों नहीं? Because Marvel fake that universe बन गया. कि you kill a character, you resurrect them next episode. That's हर शो में हर गाया भाई मर गई अगले एपिसोड में वापस जिंदा हो रही. 2 मिनट नहीं पर उसमें देखा जाए if someone has binged the show 2 मिनट हुए मर के जिंदा हुआ. दिख रहा है एपिसोड का लास्ट सीन था वो, नेक्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन था शी इज गेटिंग बैक. 2 मिनट हो रहे हैं. मतलब कोई बिंज कर रहा है उनको, मतलब क्या बोल
Having said that, Just sadly, also that was the thing that they started the episode with. Like, if they would have waited for the end of the episode to show that she's, तो मेरे को थोड़ा लगता. I would have felt कि oh shit, okay, ये सब हो गया and okay, she's alive. Okay, great. Like, you know, at least they could have shown the repercussion ki हाँ, if she's dead, then what is going wrong in the world? And then we would know, okay, she's alive. Okay, so all that thing that went wrong could be fixed. At least that thought process. I don't know, weirdly did not feel like it. See, एक और चीज मुझे सबसे बड़ा सीक्रेट इन्वेजन के साथ मार्वल के साथ भी क्वेश्चंस ही है. They are not going to use half of these characters. They are not. They don't have place to use. कहाँ use करें? Miss Marvel, She-Hulk, उनमें आधे characters जो बताया, they are pointless. My complaint with this is also, तो देखा जाए कितना saturated बन गया है अभी MCU. They can't possibly use all these characters. And that's my point. Instead of telling layered, complex stories of pre-existing characters, ये लोग introduce किए जा रहे. That's also a worry because instead they had so much potential. They are an entire MCU set. मतलब MCU हाथ में आपके पास, उसमें tell complex layered stories ना. ये जो already existing characters है, आपको setup नहीं करने की जरूरत. We already know those characters, right? अब उनको मैं इस show की बात नहीं कर रहा in general कि they could pick a क्या कहते हैं comic जिसमें already MCU exist करता है. Tell layered stories. Why? I think all three of us would agree कि Civil War is one of the best MCU. It is. मेरे लिए it is top. हाँ, मेरे लिए it's top 3 because of the fact कि कितना interpersonal movie है. Interpersonal और कितना layered है कि आपने implosion कर दिया basically. Implosion कर दिया खुद Avengers में और implosion कर दिया. At the same time, in that movie there is a sense of distrust. In Winter Soldier there is a sense of distrust because no one knows whom to trust. And in a show like Skrulls, जिसमें it's a huge missed opportunity. Having said that, yes, we tell complex layered story. हम surface level stories बहुत देख चुके हैं. अब जो last fight भी मैं बोल रहा था ना, जो no impact, because impact क्यों नहीं है? Because हमको पता है कि stakes है ही नहीं. Because ये मरेगा नहीं मरेगा हमको पता नहीं मरने वाला first of all. हाँ, या मरेगा भी नहीं, कुछ consequence ही, मर भी गया तो 10 character who will replace him. Exactly was my question. Like, even if he dies, then we don't know what is going to happen. Like, what will go wrong? We don't know. Yeah. Itna secluded and it's like, you know, there are two people in the room. One of them dies. So what? If you look at it, इतने subplots अभी तक pending है. If you watched Eternals, एक Kingo के अलावा कोई reference ही नहीं है show. They don't even exist, and these are very important people, very powerful people. Yeah. Gaia, even in this show, Gaia has become the most powerful person in the MCU. But मैं बोल रहा हूँ वो वापस नहीं आना चाहिए. हाँ, मतलब वापस नहीं आएगी. मतलब they won't use her मतलब आगे in a very complex institution. मतलब there is no point because she doesn't belong in that world. अगर तू She-Hulk का शो बना रहा है उसको तो गाया को नहीं लाएगा, या तू Daredevil बना रहा है तो नहीं लाएगा. MCU का slate क्या अभी आगे? X-Men again, I don't want to see X-Men because of the fact new characters already saturated world है, उसमें आप 10 और characters को क्यों ला? You know, I sort of would like to disagree on this. I am liking the new characters ka introduction, but at the same time, it's like, you know, it's the same story of one ordinary guy getting powers and then dealing how to deal with it. That's my point. Go layered. Layered नहीं है. हाँ, exactly. But layered कब आएगा? Layered storytelling कब आएगा? कि first of all, they don't have the pressure of establishing the character or the world, because MCU का हर show, She-Hulk, Miss Marvel, Loki, her show is a different world, and every world has different sets of characters. Yeah. And उनको इंट्रोड्यूस करने में इन सारे शोज को 4 एपिसोड लग गए. बाद में तुम लेयर्ड स्टोरी टेलिंग कहाँ से लाओ? Avengers had the luxury of having X number of characters, and see कभी ambition. See, I'm of the opinion that ambition is the best thing anyone could have, but in a sense कि don't go haywire with it. एक चिंपैंजी को गन दे तो वैसा नहीं होना चाहिए. Now it's like कि चिंपैंजी को गन दे दी हर जगह शूट. So it's the same thing like we were which podcast, John Camper.
It is Yeah. just like ask a 4-year-old kid, ki, what do you want to do in the last episode? What if one guy has all powers of all heroes? Kar do. I don't want to talk about the last episode क्योंकि it's so illogical. Yeah. Not just illogical यार. I mean, my point being, इसमें ना setups नहीं है. Coming back to Civil War, going back to Civil War, Age of Ultron अगर तुम लोगों ने देखी है, तुम लोगों ने First Avengers देखी, you saw it Civil War में कि these two guys will go against each other at some point. Yeah. And those were very subtle. First Avengers में तो it was loud, but you know they'd fight together. Age of Ultron में when they are वो wood cut कर रहे, that's one of the best scenes in the MCU. Yeah. मतलब philosophically, thematically, it's one of the best scenes in the MCU. उसमें they are having a disagreement about their political agendas. Yeah. And that's leading up to something, right? Yeah. तो मतलब यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन का there is no setup. निक फ्यूरी चिल कर रहा है, निक फ्यूरी चिल नहीं भी कर रहा होता तो इस शो में कुछ फर्क नहीं पड़ता. Exactly. राइट. आपने जो पोस्ट इसमें एक तो पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था ना एक एपिसोड. नहीं इसमें नहीं था. I think उन लोगों ने निकाल दिया. शो को भी निकाल because it is very unlike Marvel to not have a post credit, but I think because of the bullshit going on, I think they are like, you know what, let's not do anything. But what? With the whole everything, like all the shows are stopped, production रुक गया है, नहीं पता. But उसमें post credit scene का, हाँ, they don't know that. They don't know what next is coming now. They don't in a way. See, I was very confident of the fact that they have a vision, etc., etc. Right now, that because of two possibilities, कि Kang, let's थोड़ा go into Loki and then Marvel in general. एक मुझे लोकी पे तुम दोनों के थॉट्स से तो बताओ. मेरा सिर्फ मैं एक पॉइंट मेरे को सिर्फ बोलना है कि हैविंग व्हाइल वाचिंग लोकी ना, आई वाज लाइक कि कैंग को नहीं दिखाएंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ जो चल रहा है उसका. बाय द वे ऑडियंसेस को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं अगर जिनको नहीं पता. श्योर. कैंग द एक्टर प्लेइंग कैंग, जोनाथन मेजर्स, उसके ऊपर एक ट्रायल चल रहा है अभी. ही पॉसिबली मतलब क्या कहते हैं, उसने कुछ तो हैरेसमेंट के चक्कर में ही वाज सेंट, मतलब समवन फ्रेम्ड हिम नहीं, सॉरी, किसी ने केस किया था. तो अभी या मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था भाई, इधर कैंसिल अपना हो जाएगा. जोनाथन मेजर्स के मतलब अपने कैंसिल. बट having said that, so his PR team dropped him. He's dropped from multiple films. MCU now is so involved or so मतलब deep with him कि अब वो लोग वापस नहीं जा सकते. Yeah, exactly. They all have all their chips on him, and it's like वो गया तो Kang गया. Right. नहीं, Kang नहीं जाएगा. I feel the easiest way is to recast him. But that is not just the easiest but the most obvious thing to do, but at the same time the hype that they have created in Loki, that will be lost. Exactly, because like right now I feel like he is a good face for Kang. Although I agree with you, the writing will have to be better for the films to be better. Kang, obviously as a character, Thanos worked because the writing was good. Thanos मतलब अभी क्योंकि Kang के साथ लग नहीं रहा. Ant-Man was a very kiddish film मेरे लिए. पुअर राइटिंग, मतलब मत बात करो, करनी है तो कर सकते, बट यार अभी आई एम एट अ पॉइंट कि कितना ही बुरा बोले यार, क्यों बुरा बोलना है, सेलिब्रेट करते हैं. I agree to that, but I think no matter how much, like I agree that we shouldn't talk bad about things even if they are hypothetically, but at the same time these discussions should happen, right? More than just being talked about. For us as young filmmakers, it's something to learn from. Yeah, so which is why I don't disencourage those conversations, but at the same time I agree that we should celebrate more than we complain. Yeah, and don't see, I even all three of us want to love these shows. मतलब हमको बोलना है कि how good they were, but नहीं हो पाया. I know. I actually feel sad. See, all three of us, there are people who have given up on the MCU already, जो shows देखते ही नहीं. Yeah. हम मैं तो every Wednesday चालू करता हूँ, देखता हूँ 1 घंटा बैठ. Same. And then after that episode, when you feel that kind of disappointment ना, मुझे disappointment इसलिए नहीं है कि खराब episode था, मुझे disappointment है कि MCU as a whole कहा जाए. मतलब शो तो चले, it's a very small thing, एक शो खराब है, एक episode खराब. As a whole MCU, see, Guardians was a great movie. It was a great movie.
एक रीजन, बड़ा रीजन ये भी है बिकॉज जेम्स ही हैज द पावर, मतलब टू Not just the bada reason. I feel since Endgame, every good movie that has come out, when like it comes to Marvel content, it is always, or at least for the most part, has been because the directors who came on board had a vision for it. इसमें एक छोटा सा, एक मुझे वो बीच का एक छोटा सा कैविएट है. आई सिर्फ एक मूवी का, नो वे होम आई फील इट वाज अ वेरी स्टूडियो मूवी. इट वाज अ स्टूडियो मूवी. डायरेक्टर वाज वेरी इंटरचेंजेबल. अगर जॉन वर्ट्स नहीं होता कोई और बना देता, एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी सिमिलर मूवी, नॉट इफ नॉट द सेम. whereas James Gunn, you can't imagine Guardians without James Gunn. You can't imagine. एंड ये भी मैं तेरे को बोलता कि जो पुराने MCU के डायरेक्टर्स they were better etc. भाई टाइका वाइटिटी has delivered a bad. मतलब it. See, I liked Eternals, but Chloe Zhao is one of the greatest directors living. In this generation, she did not make a bad movie, but it was not the best MCU movies for most people. I liked it. I loved it. It is one of the films I watched like thrice. मैं भी 2 बार तो थिएटर में देखा. मैं 2 बार IMAX में देखा. I liked it. Eternals was one movie that tried telling complex and layered story. Complex and layered story. Although it should have been a show. It should have been. It was too rushed. So many characters. आप इतने बड़े actors और बड़े characters को आप justice नहीं दे पाते. So it's like all the characters had a lot, which I'm not saying कि वो दिखा नहीं, क्योंकि Eternals were very new characters for me, right? But at the same time, it was seen in the film कि they have so much more to them than just powers or than just people. वो दिखा था, but at the same time it could have been more. Was like what I felt. Secondly, one big disappointment for me was like how it ends. The ending, there was already like a lot of complicated stuff going on within them. Then I forgot their name by now. The other creatures, the deviants. The deviants come in, and then there is the whole thing कि Tiamat is also being born at the same time, and वो तीनों चीजें एक साथ clash करी कि neither of it got enough attention that it should have gotten. At least that is what I felt. See, again, they tried telling a layered story, but उसके लिए build-up ही नहीं था. Build-up देने के लिए time ही नहीं था. Exactly. कि आप हर character को एक setup pay off this. See, storytelling मेरे लिए मैं बहुत easily break down करता हूँ कि setup and payoff से audiences का वो feel हो पाएगा, मतलब feel कर पाएंगे. In any way, मतलब see what is humor कि taking the stakes up, then वापस tension create करो, break करो. Humor and horror both. It's basically breakdown करे तो it's setup and payoff, right? Yeah. So applies to every form of storytelling, right? Absolutely. But like Eternals was also like philosophically very heavy, which I kind of liked getting into. I like getting into it. So I like it personally. Yeah, I like same. Except the ending a little bit. I'm thoda sa two ways. See, मुझे Eternals 2 जगह नहीं पसंद आई थी, if I remember correctly. किसी का ऑडियो Yeah, it's okay, I'll go. Continue. कोई नहीं. Eternals 2 reason की वजह से नहीं पसंद आई थी. First is, if you remember the last scene, वो याद है वो एक कैरेक्टर आसमान से वो बड़ा जायंट आसमान से आ रहा है, and he abducts the characters, right? Erisham the judge. Erisham जब appear होता है and उधर लंदन में कोई तो पार्क है, तो लोग देख रहे ओ देखो ये देखो. There is no sense of fear or stakes. मतलब ये तो हर रोज होता है. ये थानोस आके छुट्टी हो जाएगा, ये तो कुछ. But you know what? I feel that scene was okay. Because वो आया and the world that we're living in, you and I would also just pull out our phones and like either take a photo or see what is happening. But that was not meant to be a commentary, no? It was meant to be just another scene जहाँ पे it was centered around a couple of characters. Other than that, everyone was an extra. My point being हर movie या show में world end हो रही है. There is a giant Antarctica में एक giant इंसान जैसा आदमी बर्फ बनाओ. कोई context ही नहीं है उसके बाद, कुछ आया ही नहीं. मतलब it was there in She-Hulk, छोटा सा web. Yeah, there was there. I don't know. But it doesn't make a difference. But yeah. Again, why मतलब
वाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने उस प्लॉट पॉइंट का विच कुड हैव बीन एन एंटायर शो और अ मूवी, हाँ आप उसको सिर्फ एक जोक की तरह ट्रीट करो, उसकी इसके लिए आपने इतना बड़ा सेटअप दिया है. इटर्नल्स जो स्टोरी, जो स्केल में स्टोरी कहना चाह रहा है, आई फील इटर्नल्स शुड एंड विल कम बैक इफ एंड वो आएंगे टू टेल द नेक्स्ट फेज ऑफ द एमसीयू, जो मेरे को लगता है कि गैलेक्टस की तरफ एम हुआ जाए. Yeah, I've heard a lot about it after वो उस टाइम पे था कि कैंग के बाद गैलेक्टस, कैंग के बदले भी गैलेक्टस, बट गैलेक्टस इज द अल्टीमेट बैडी एमसीयू में. in the मतलब comics. the most powerful, although having seen so many MCU films right now, कि अभी I want a good layered story except instead of a grandeur, मतलब big scale का. Yeah, मतलब कि exactly. powerful characters doesn't mean good characters. And it's like conflict is the question now. मेरे को Civil War क्यों अच्छा लगा था, the conflict that they both Right. had. Loki क्यों अच्छा, Loki also I like Loki because of the conflict that it has. Free will, bro. It's a really good conflict to get into. Now it's saturated. ऐसा बोलूँगा. We've seen it in so many places right now. It's Where? everything. मतलब मेरे अपने ने कौन सी अभी के साथ में देखी थी, इवन ये अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से लेके एवरी फिल्म एट इट्स कोर इज क्वेश्चनिंग फ्री विल. A lot of films. मतलब See, I think Spider-Verse, I don't know if it is going to be merged into the whole Secret Wars wala thing. please no. I don't know, but it sort of नहीं, felt it like won't. because it is working with that studio, It they're won't. using that conflict. I don't know. It felt like it. What across the spider? I mean, if they're using a similar conflict that is already going on in Marvel right now, then नहीं, it won't It's come a- as a surprise that they'll both merge together. नहीं, I completely don't see it that way. I see hope. them as I hope. they are separate studios. They are, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर those weren't separate studios, तो Venom वो सब भी अच्छी होती first of all, and Into the Spider-Verse भी इतनी अच्छी नहीं होती. मतलब हाँ. Venom अच्छी होती और ये इतनी अच्छी नहीं होती. हाँ. MCU again. Do you still coming back to Loki थोड़ा? Loki के ट्रेलर थॉट्स आमिर पहले. आमिर. हाँ मतलब आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, जैसे मैंने बोला लोकी के फिनाले से. पता नहीं मुझे वही पार्ट बहुत ऐसा हो रहा था कि यार कैंग को तूने बोला बराबर है कि यार कैंग को मतलब वी विल हैव टू बी रिवील्ड इन अ बेटर मैनर एंड उसको फिर हम जब जानेंगे तब हमको वो पे ऑफ मिलेगा, बट वो नहीं हुआ. मतलब पूरे एपिसोड में ही जस्ट केम इन एंड ही वाज जस्ट गिविंग ऑल द एक्सपोजिशन और बस वो एक ऐसे अच्छे क्लिफ हैंगर पे लाके वो लोग ने छोड़ दिया. मतलब मुझे कुछ ऐसा पूरा शो देखने का कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला. दैट वाज माय मेन पॉइंट, जो एक्चुअली बहुत बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बिकॉज शोज आर मेंट टू बी लेफ्ट ऑन अ क्लिफ हैंगर. बट यार पता नहीं मतलब लोकी को वो बहुत ऐसा एक अच्छे शो के डायरेक्शन में जा रहा था एंड दे जस्ट लेफ्ट इट एट द एंड जस्ट बिकॉज तुमको बिल्डअप करना है, तुमको कुछ बड़े यूनिवर्स में करना है. बट उससे मुझे कुछ अब तक तो फायदा नहीं लगा. मतलब आई गेस नो वे होम में, बट वो सब में भी दे हैड देयर ओन प्रॉपर्टीज, दे हैड देयर ओन रूल्स ऑफ द वर्ल्ड. नो वे होम में सेम था. फिर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम तो क्लिफ हैंगर की बात कर. हाँ मतलब वो नहीं, वो सब जो वो लोग ने किया क्लिफ हैंगर तो देख पर्सनल लेवल पे लोकी का क्लिफ हैंगर इज वो तो ऑब्वियसली सीजन 2 में ही जाएगा. बट जो वो सब था कि ब्रांचेस खुल गए हैं एंड एवरीथिंग, वो नोवे होम में एड्रेस नहीं हुआ. क्वांटम मीनिया में भी इवन इफ दे आई डिडंट नो अबाउट दैट तो भी चलता था. तो आई डिडंट सी कि तू जो बोल रहा है कि वो बिल्डअप कर रहे टू समथिंग बिग. ऑब्वियसली मतलब कैंग का जो भी होगा तब तक होगा, बट अब तक मुझे कुछ लगा नहीं. वो हर सीरीज के वही प्रॉब्लम है. नहीं बोल. हाँ तो लोकी का वही था कि सीजन 1 का मुझे बहुत ही ऐसा बैड टेस्ट था, जो जबकि मैं रीवॉच किया तो इट इजंट अ वेरी बैड शो, इट्स अ वेरी वेल मेड शो. एंड सीजन 2 का ट्रेलर देख के आई एम रियली एक्साइटेड नाउ एंड आई होप कि वो टाइम वाले जो उनके पास वो जो है टाइम का जो प्रॉपर्टी है वो उसको बहुत अच्छे से यूज करने चाहिए. जैसे वो लोग ने वो टाइम स्लिपिंग का एक नया कुछ जो भी है वो डाला है एंड एवरीथिंग. तो आई एम होपिंग कि इट is a very good time travel adventure instead of going in a direction कि वो multiverse में भी जाएगा. but I want it to be a very ऐसा self-contained stand-alone thing instead of bringing everything
ऑब्वियसली वो कैंग का सेटअप होगा उसमें, बट आई हाँ। वांट कि जैसे इसमें वो टाइम पीरियड वाला कैंग दिखा रहे, क्या नाम है उसका जो भी है वो एंड में जो भी रिवील होता है कि जो पीरियड में I सेट don't है, know. आई एम होपिंग कि ही टर्न्स आउट टू बी द मेन एंटागनिस्ट, या दे गो ऑन टू फाइट अनदर वेरिएंट ऑफ कैंग, बट लेट्स सी. मतलब आई वांट कि थोड़ा पर्सनल सेल्फ कंटेंट स्टोरी हो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ऐसा बिल्डअप वाला जो. I Right. agree. हाँ, ट्रेलर लुक्स इंटरेस्टिंग, देखते हैं. हाँ, sorry. You know, Loki always has, like, for me at least, felt like it is going to be a contained year. Even when they left that cliffhanger, it wasn't. It did not feel like a thing कि हाँ भाई इसमें ये किस में आता है देखते हैं. It was not like that. It was very obvious कि season 2 में आएगा. And Loki is I think the only show जिसमें season 2 आ रहा है, correct? At Marvel least का. of it. हाँ, so ये अभी तक. So far, the only show जिसमें season 2 आ रहा है. And I kind of liked it because of it. I wasn't disappointed by the final. Again, as you said, ki the exposition could have been there instead of speaking. Sure. But then Loki is this one show where I was like, chahiye tha kya exposition? Because the exposition is what they were hyping in that monologue that Kang gives. Right? And the whole point of the show, it's like how they've played the character. The character Loki is supposed to be an anomaly. He's not supposed to exist. Like जैसे उसने वो block use किया, right? Loki का character, according to like again the whole conflict of free will, but according to whoever decided it, he's supposed to die by the hands of Thanos. Loki becomes an anomaly the moment he uses that Tesseract. Sylvie was always an anomaly, but she has found a way to exist in the worlds that are dying, right? And both of it in the end come together to kill off everything that has survived. Like Kang, like in the end, he who remains, he's supposed to be the one remaining after everything dies. But because of these two anomalies, they kill off everything. And that is where the cliffhanger comes in. And when I look at it from this logic, it made sense to me. But I completely understand how, like, you said ki dekh ke aisa reward mila nahi. I get that actually now. It's a new perspective for me, damn. But, yeah, please. नहीं, I have a different opinion, but at the same time, I've learned कि people will have different takeaways depending on what they were expecting. Expectations Sure, सबके अलग yeah. होंगे, etc. मैं पता it worked for me personally because I was enjoying the world building. Oh yeah. उसमें ना the world building of that show was amazing. At the same time, trailer का भी जो world building है, it's beautiful. Beautiful. वो deny नहीं कर सकते, but at the same time तुमको जो small references है, DB Cooper का याद है वो फ्लाइट, अरे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का reference. And एक और कौन सा था? the वो ये volcano eruption, I forgot the time. Yeah, Rome का, yeah. So these were so meta references, and all these references don't have a clear answer. And उसमें show में Loki was the answer. कि Loki made it happen. बहुत cleverly use किया था. That was very fascinating for me. So मेरे लिए ये था कि after watching the show, there was a deep dive into the Easter eggs. Yeah. कि see मुझे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और डीबी कूपर के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था. I love those mysteries. अभी these are the biggest mysteries in the world. अभी तक पता नहीं चला डीबी कूपर. Yeah, I know. I knew about DB Cooper a little. जब भी मैंने show देखा, I was like, damn. वही. Having said that, last episode यार, to be very honest ना, Kang I wasn't expecting him to show up so अभी से, क्योंकि Avengers he was supposed to be the big baddie. He was supposed to be the next Thanos, and वो Loki is I guess first year में आया था. First year of this 2021. fourth phase के first year में आया था. So 4-5 साल build up करना मत देखा जाए. अभी तो जब तक मूवीज आएगी तब तक और टाइम चला जाएगा. Having said that कि मूवीज आएगी नहीं पता नहीं, but वो बात आता है जोनाथन मेजर्स की बात पे आता है. But see, I loved the episode because of the stakes in terms of कि मेरे को फील हुआ कि कुछ होने वाला है in terms of MCU change हो. After that moment when Sylvie stabs Kang, MCU changed forever. जो वो मेरे in the moment वो मेरे mind में था, and it felt like it. Even when Loki came to the alternate timeline,
when he sees the statue of Kang, we feel ki things are not right. Abhi, see, the biggest compliment I'd give that is it makes your protagonist vulnerable. In that scene, it made the protagonist so vulnerable कि क्या हो रहा है कि उसको पता ही नहीं आसपास. He's not in control of anything, and that's the best movie. That's the best character trope you can use in any film. Yeah. यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन के अपना क्यों क्रिटिसाइज करे? At its core, everyone is in control of everything that's about to happen. तो उधर there was stakes, there was tension. At the same time, I feel कि exposition बहुत था वो episode में. There was information. And, Loki you're talking about. Loki last Okay. episode, but Yeah. very important information. वो ठीक है. Loki का trailer I liked it. World building was good. Again, मुझे first scene अच्छा लगा था. उसका नाम मैं भूल जाता हूँ. Everything everywhere. Yeah, I forgot. Boycon कुछ करके. Yeah, Life yeah, about yeah. is. यार, we are bad. We are film students और हमको यार ये. We're bad with names, guys. Just. Yeah. True. Having said that, that was a good scene. यार, Jonathan Majors to be चलो completely off the topic. Jonathan Majors is a fantastic actor. वो अपने को I guess no one's Definitely. debating on it. But Definitely. right now MCU is also in a pickle. कि how do they use him? Because recasting is the safest option. Having said that, यार, you've set up a character. Although Ant-Man में I thought कि his character उसके साथ बहुत injustice हुआ था in terms of the writing. Because if you are the next big baddie, if you are the next Thanos, you shouldn't be vulnerable to Ant-Man. मतलब. Yeah. And You shouldn't be vulnerable to large ants. Right. Having said that, हाँ यार, तुम You लोगों know को क्या? what? You know what? Ant-Man, like how jitna we heard, how much we heard from it. Initially, Ant-Man was supposed to die in that film, and that was supposed to trigger uski beti ka arc to, like, for the Young Avengers. I wish But- that happened. I love Paul Rudd, but I wish. But see, again, right now we're not talking about the actors, right? We're talking about the characters. So initially, as far as I know, I read this somewhere that Ant-Man was supposed to die, and they were going to do the Young Avengers team up, but then that plan got cancelled for some reason, so they couldn't kill him because injustice to the character, and so they decided to do injustice to him instead. One more thing, मतलब मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, बट या मैंने ध्यान से नहीं देखा, बट क्वांटम मीना के एंड में इज इट कि वो दूसरे यूनिवर्स में आ गए हैं? नहीं. It was a theory. It felt like it. It was नहीं, a बट theory. मैंने कल एंड वापस रिवॉच किया तो उसमें दे शो द सेम montage जो स्टार्टिंग में दिखाया है. ही इज वॉकिंग अराउंड इन द सिटी एंड एवरीथिंग, बट कुछ चीजें अलग दिख रही है एंड ही कैन सेंस अ बिट एंड वी कैन सी फ्रॉम हिज फेस कि कुछ अलग दिख रही है until वो वापस स्माइल करके चलने लग जाता है. I feel now he knows कि there is a threat. मतलब there's a big threat that's looming, and that's not gonna stop. वो वाला कोई theory कोई push कर. बट ऐसा कुछ था नहीं. Having said that, मुझे सबसे Officially नहीं था. मुझे सबसे contentious इसमें ये बात लगी. अमर तो कल Ant-Man क्यों देख रहा? अरे मैं एक रेफरेंस के लिए आई वाज वाचिंग कि वो जो उसका वॉक होता है ना, द परफेक्ट डे वाला जो वॉक होता है उसके लिए Yeah, देख रहा था. yeah. तो आई अच्छा, म्यूजिक वीडियो के लिए था. हाँ मेरे अरे. दोस्त. कितने में अच्छा. वीडियो बना रहा है? चल. But one thing that I wanted to say, Loki ka ending, the last episode is, I think, a good counterpart to whatever we talked about today. It does set up Ant-Man Quantumania, the ending, because Ant-Man Quantumania only will happen if He Who Remains dies. And that was the last episode of Loki. He needed to die so that the multiverse could unravel, and then all of this bullshit. And because time doesn't work linearly when you are looking at a macro level. When you are in that extra dimension, time doesn't happen linearly. So वो rupture और ये एक साथ ही हो रहा है. So you don't see all of these Kangs growing up. वो लोग already बड़े और छोटे, they are existing in one plane. That is the multiverse. So he needed to die in case बोल रहा हूँ. He Who Remains needed to die so that Ant-Man could happen, and Ant-Man में all that bullshit needed to happen so that Loki season 2. It's some locha there. नहीं, I don't know but- exactly.
but even though it was a setup sort of, now we know Loki as a show, it felt nice. I enjoyed watching it as a standalone. Yeah, that is a counterpart to whatever we talked about today. But So, one उसमें thing I needed to mention. I'll disagree. I agree with whatever you say. I just want to say कि Ant-Man में जो हो रहा है is it's a direct effect of what happened in Loki. Ant-Man में भी जो हो रहा है, that's not good writing or good storytelling. And Oh, yeah. to be honest, one thing that I've noticed is, which wasn't the case earlier, they are open to shifting directions. Because if you heard Mike Holden, no? Mike Holden and Mike Holden also write No Way Home? No. एक बार चेक कर सकते No idea. नहीं Yeah. क्रिस मैकेना एंड वो दो जन ने लिखा था ना जिन्होंने Okay. हाँ तो अब हाँ लोकी में जो इवेंट्स हो रहे हैं, माइक होल्डन ही टेक्स इट टू लोकी और वांडाविजन में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ही टेक्स इट टू डॉक्टर स्ट्रेंज, राइट? अब Mike Holden said something कि it was supposed to be a very different story. Even Doctor Strange as well as Spider-Man No Way Home, those were supposed to be very different stories. They got the rights और जो भी मतलब जो भी copyright के जो भी issues थे to bring all the Spider-Mans into the universe, they got it checked. After that they changed the story. So pointing दिख रहा है कि there is no clear direction. Which, see, those two movies are good. They try to one up what they were supposed to do on paper. Pehle. They did that, but at that cost, it's messing up with a lot of other stories. I feel not directly maybe, but as MCU as a whole, एक direction नहीं दिख रहा for the first time. पहली बार मतलब phase 4 पूरा, and even right now I don't know कैंग के साथ क्या करेंगे. If they choose to take या मेरे को ऐसा देयर आर पॉसिबिलिटी टू पॉसिबिलिटीज कास्ट उसको कास्ट करो, या तो चेंज द बिगर या बिग बैडी भी नहीं, इट विल अफेक्ट सीक्रेट वॉर्स, इट विल अफेक्ट कैंग डायनेस्टी. इट स्क्रैप तो नहीं करेंगे, दे विल मूव ऑन टू अ डिफरेंट स्टोरी लाइन. दे आर सो डीप इनटू इट राइट नाउ कि अभी दे कांट, मतलब इट विल बी अ वेरी शिटी मूव टू बी ऑनेस्ट. वार्नर ब्रदर्स ने किया था जस्टिस लीग के साथ लास्ट मोमेंट, आधी मूवी पे उन लोगों ने तो किया था कि उन लोगों ने मूवी का डायरेक्शन चेंज किया. वार्नर जस्टिस लीग हमें क्रिएटिव विजन पूरा चेंज हो गया. हैविंग सेड दैट, अपने एक्चुअली में अभी गोल गोल ही घूम रहे हैं, कैंग पे ही वापस आ रहे हैं. थोड़ा टॉपिक चेंज कर, मुझे एक पॉइंट रखना सिर्फ ये ना, बिफोर सीक्रेट इन्वेजन आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक नहीं, मैं बहुत ये था कि आई वांट टू सी कि हाउ केविन फाइगी एज अ पर्सन, आई सी हिम एज अ लीडर in Hollywood. He's a big person in Hollywood, and he has achieved so much. Now comes a point that everything's going haywire, and for me, when your highs are high, everything's good, but when you fall, it's about how you pick yourself up. So Kevin Feige has that moment. I wanted to see how he deals with it. Right now, Kevin, Secret Invasion के साथ, it's not a good start, I'd say. But there are a lot of problems. Kang, writer strike, actor strike, सारे productions रुक गए हैं, and सारी release dates pushback हो गई है. Bob Iger बोल रहा है कि shows कम करो. मतलब as Kevin, अब तुम लोग ये बताओ, अगर तुम लोग केविन फाइगी होता है तो how would, even you, Vigu wants to direct at some point, Amir is a director, how would you take the entire MCU forward, मतलब अभी from here? Honestly, I don't have a particular answer to it. Like, because you mentioned that I want to direct, it could be a amalgamation of answers. See, there are like MCU was a completely different direction when it used to be, pre-Endgame, and I'm pretty sure कि तभी भी पूरा like तभी I wasn't involved into it as much because I was a kid, but I'm pretty sure तभी भी ये same logistical issues, rescheduling और ये वो हुआ ही रहेगा. Correct me if I'm wrong. One thing I'd like to add,
the biggest problem here is the box office and the critical failure Hmm. of the existing properties. वो सबसे बड़ा problem है, more than Yeah. the logistical issues. Yeah. Yeah, but How would you tackle that as well? Please? honestly, I don't have enough knowledge or experience to tackle it. I am a guy who sits in a room in front of two screens and make music, dude. नहीं आमिर यार I would I don't know why Kevin Feige. I understand कि उसको investors को appeal करना है, so he has to keep that relationship with Disney and everything. तो इसलिए वो Disney Plus पे shows वगैरह ला रहा है. One thing I observed आज के conversation से, एक चीज what could have been is कि he could have just realized these stories as normal movies, जैसे Werewolf by Night. I know कि हम सबको बहुत अच्छी लगी, and something like that. What they could do is they can just, if the story isn't for a episodic TV show or is not of a series nature, limited series भी अगर नहीं बन सकता है, they can just put it as a TV movie and as one Disney Plus movie. If they can just put it as a OTT movie, they can do that. ये मुझे अभी एक idea The आया, special but उसके अलावा presentations. हाँ Yeah. Marvel presentation, Presentations. उसका intro Presentations. बहुत cool है. Arey, But हाँ, lovely. तो हाँ, they can do that. They have the resources and they can do that. But उसके अलावा, what I noticed with Guardians of the Galaxy Volume 3 in particular was that James Gunn wasn't given the job to make Guardians of the Galaxy. It was him who came to Marvel कि मुझे ये characters पे movies बनाना है. So they should Yeah. just pull in filmmakers. So there is अभी इसमें ऐसा है कि Marvel got James Gunn on board and then आपको क्या अपील कर रहा है? The same thing happened with Chloe Zhao. Chloe Zhao came with a presentation that was so irresistible. Eternals कि Eternals के character, Eternals के लिए उसको hire किया था first of all. उसके बाद वो characters के साथ उसको क्या करना है? That liberty they tend to give the creators. फिर writers come on board. Then the film goes into pre-production. That happened with Chloe Zhao. But sorry अगर मैं थोड़ा एक काम कर, आमिर बोले मेरे को इस पे थोड़ा इक्वल करना. So my point was कि वही, let's just give filmmakers what they want to do instead of hiring directors to direct their own stories. Like वही जो हमारी बात हुई थी, studio films, studio shows बनाना, and maybe they can just cut down on these Disney Plus shows जो शायद हो ही रहा है. So I don't see any sense in making these big shows, introducing so many characters, and then you're not doing anything. Maybe introduce karo characters ko they can be in their own universes, but kuch to we need payoffs at the end. So if I was Kevin Feige तो मैं यही करता कि यार investors को appeal करने के लिए बस shows बढ़ाते नहीं जाता. I would just focus on the storytelling and bring in new voices. हाँ बोल. Like apart from the previous joke I made before, like Amir started speaking. On a serious note, see, it's like when you are Kevin Feige, you're not just dealing with films and stories and characters. You are dealing with the business. You are dealing with the money, and you are dealing with yeah. अभी इसमें भी दो पॉइंट्स है. एक तो मुझे आमिर का ये बोला था, आई टोटली 100% agree with कि the solution, the biggest solution factor is giving creators the leeway and to express their voices. That's the best solution you can have. और भी आता है, it's a more complex problem. But Kevin Feige doesn't have to answer to the shareholders. उसके ऊपर Alan Horn था पहले. He was the Warner Brothers. So Kevin Feige is responsible for the MCU. Disney, Bob Iger, the CEO, उसको answerable है Alan Horn. He left the company. Alan Horn was answerable to the CEO. He led all the film divisions, जैसे Lucasfilms, Marvel, National Geography और Pixar, Disney Animation, everything को वो oversee कर रहा था. And उसमें he was the person in charge, पूरे film division को in charge कि तुम लोग करो. And he also departed post 10 years. So this could be a factor. Having said that, Kevin Feige doesn't have to answer. But he gets a memo. These are the number of shows and these are the number of movies कि आने चाहिए. इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं बोल. टॉप मैनेजमेंट से उसके अलावा कुछ नहीं है. हाँ,
that is a big point of contention, which did not work. Also, एक चीज I'll add. I feel a huge factor that led to the downfall of the MCU is, I don't like to blame a person, but Bob Chapek. Bob Chapek is so Bob Iger was replaced by Bob Chapek. Yeah. He knows nothing about. So John Campea के show में मैंने बहुत देखा है, there are documentaries on it. Yeah, there are. Bob Chapek doesn't come from film background. From वो cruise वो सब संभाल रहा Disney में before he got the promotion. And there comes the shareholder mindset. The creative mindset. There wasn't a vision, to be very honest. And सिर्फ एक number of कोई भी स्टूडियो के लिए अगर कोई कमा रहा है तो they want कि ज्यादा कमाए, ज्यादा. अगर एक मूवी से तू बिलियन कमा रहा है तो तू 4 मूवी बना 4 बिलियन कमा. That's the basic thought. The same thing happened with Barbie and Mattel. हाँ. So again, these are just hypothetical. I don't know what boardroom में क्या चल रहा है, but this is a very systemic problem which arises from the top management of Disney as a whole. And having said that, we will continue. Yeah. So I was like, again, I'm not trying to like give solutions ki ye karo wo karo, because I don't know if I'm at that place. But it's like when you are Kevin Feige, I completely understood what Mitul's added to it. But at the same time, I am pretty sure ki it's not just ki हाँ भाई तू creative संभाल. I am pretty sure he has to answer on a financial level as well. He has to, yeah. Exactly. So it's like when you are Kevin Feige, you are playing the money game more than the creative game, because the people on top of you want nothing but more money in, and people below you, the audience, want nothing but good shows, like, you know, so that they can spend their time on it. And handling both of it becomes a very tricky situation. True. It's like one thing that I am pretty sure I would have taken into consideration is results, because at the end of the day, business is nothing but trial and error, right? Hello. Yeah. I saw इतना confused reaction तुम दोनों का, तो मैं बोला confused नहीं, different कुछ मैं use. Yeah, again, see, I only have experiences of running like small businesses. ऐसा कुछ मैंने बड़ा चीज किया नहीं है. So that is where I am coming from. It's like, if things are going wrong, then your first reaction to it would be to detect the problem, recognize it, see ki how can you fix it, and then implement the changes that are supposed to come. Because it is never like कि हाँ ये जाके fix कर दो. It's always like the things that you have to change which will lead to the better product. अब इसमें मुझे taking analogies from cricket. See, there are two sides to it. Yeah. I totally agree. When you are suffering, when you are not getting the results, the first step should be take a step backwards and observe क्या problems. अब solutions में that tends to be two mistakes. या तो you make too many changes in a sense कि there is a sense of insecurity. मतलब a filmmaker who comes in, तूने उसको निकाल दिया, हाँ, for example, दूसरे शो की filmmakers है, they would be insecure कि results अच्छे नहीं, हम भी निकालें. तो and ये होता है क्रिकेट में, होता है कि people are insecure about the team, about the place in the team when the team doesn't do well. True. So and depends on the management. If the team doesn't do well and the management is good, कोई नहीं, you tried your best, it did not work, it's okay. The process should be the key. तो ये क्रिकेट में होता है. Good management. अब at the same time, there are times कि there needs to be a change. There are people who sometimes prolong their stay. There are people who क्या कहता है, there needs to, अगर आप process ही wrong follow कर रहे हो तो change करना ही पड़े. तो अब there is I don't know what the problems are with the MCU right now internally. क्या conversations हो रहा है, because that's I want to see a documentary or I want to see something actual में क्या बात हो रही है. That's so fascinating. मतलब it would be fun. मतलब it would be fun. Disney Plus को ये एक शो करना चाहिए. But why we fucked up? नहीं special presentation. अरे Succession क्यों चलता है इतना? People in मतलब boardrooms, what they talk is actually very bullshitty. They're not talking any sense, but it's so fun.
So I think what Mithul is saying, for Marvel to make a comeback, they need to make Documentary a documentary banao, reality TV, where they just keep a camera and do the bullshit that they do in the boardroom. No. Kidding, obviously. Yeah, adding to it. यार मुझे वही लगता है कि I think they have a vision. If they thought कि वो vision अच्छा है, तो ही they went along with it for all these years. Now they shouldn't decide to take a step backwards and change it all. Yes, there are problems. See, recasting first time नहीं हो रहा है. Hulk recast हुआ था. I was going to say that. Don Cheadle recast हुआ है एक से. We have a problem. मेरा फुल स्क्रीन में नहीं था. कोई नहीं. आमिर का है ना? आमिर का. हाँ मेरा है. Point नहीं. या तो हाँ क्या बोल रहा था मैं? Hulk has been replaced. Yeah, so these are problems, logistical problems पहले भी आए. There are बहुत सारी movies can हुई है. Inhumans सब बनने वाला था if you remember. Yeah. So it's not a big deal until and unless जो core foundations है, writers वो सबको ज़्यादा leeway दो, etc. Tell more complex layered stories. मुझे पर यार ये समझ नहीं आता है. Writers को leeway मिलता ही होगा. I am assuming. मतलब see, have a vision but be flexible. True. थोड़ा flexibility होना चाहिए कि don't, if a director brings in something new, writer brings in something new, let them back it. Let them मतलब उनको उनका instinct back करना. मतलब वो आमिर का वही पॉइंट है कि let creator मतलब लोगों को तो ले आएगा मतलब creative लोगों को, but how they work is तो Taika Waititi को लाया, Sam Raimi को लाया, मतलब these are not dumb people, है ना? Sam Raimi के साथ फिर लाके क्या ही किया? वही मैं बोल रहा था ना फेलियर्स पर. That is the thing. कि तो उनको ला रहा है बट स्टूडियो कंट्रोल एक हद से मार्वल. एक मैं केविन फाइगी से सुना था कि पूरा मूवी तुम लोग बनाओ, फाइनल एडिट हमारा एमसीयू हम मार्वल का. तो दैट्स आल्सो प्रॉब्लम. Taika Waititi with Thor: Love and Thunder said very precisely the 4-hour cut is much more better than the film, right? So although 4 hours की नहीं हो सकती 4 घंटे की मूवी कैसे होगी? but I feel कि Thor: Love and Thunder did struggle with not building up to a few things, etc. So छोड़ो वो different conversation. Even then, I feel the characters were very underplayed here. Thor: Love and Thunder. तो कट का बात तो ठीक है. कट का ये वाला ठीक है. But still. कट इसलिए वो underplayed क्यों थे? Because there was no setup of payoff. Say payoff हो रहा है for example. Setup example could be. ठीक है. Could be. मतलब one of my hypothetical answers, you know. That could be. I mean, even right now, even I'm the. That is what we're doing, right? We don't know anything concrete. No, again, as Viggu said, one good thing is, if someone else's failure could be our opportunity to learn. So exactly. I am also. This is a good, मतलब task for us कि क्या कर सकते हैं. Hypothetical. Although I feel, at this point after Secret Invasion, I am at a state कि MCU doesn't really mean too much to me right now personally, but I want to be hopeful. Same. Loki का trailer देख के it makes me 1% जितना hopeful, but I liked it. I liked the content. I like the way they've edited it. I like the trailer. Secret Invasion का 10 times ज़्यादा better trailer. Context. I like the trailer, but I don't know the MCU के अंदर अभी क्या चल रहा है. And it's not a comment on them or it's not a rant on them. It's just कि someone we love so much. I'm personifying the MCU. Someone we love so much is not having a good time. I want to see how they work, because that is a journey. That is the ultimate hero's journey, right? And क्या मेटा हो रहा है मैं तो. and क्या कहता है, मुझे एक और अपना एड्रेस करने के बाद आमिर ने वो स्टार वॉर्स का बोला था. तो आई होप स्टार वॉर्स भी अगेन इट्स नॉट कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, मूवीज ही अच्छी नहीं. अंटिल मैंडलोरियन के पहले दो सीजन दोस आर ग्रेट. फोर्स अवेकेंस इतना कमाया है, 2 बिलियन जितना कमाया, मतलब सो अच्छी मूवीज को रिवॉर्ड मिला है. बट अगेन लोगों को भी नहीं पसंद है. वी कैन अंडरस्टैंड.
एमसीयू के साथ भी वही हो रहा है ना. इट्स नॉट कि लोग बैश करने के लिए बैश कर रहे हैं. इट्स Yeah, एक्चुअली नॉट गुड. because if Any they have something too good to watch and if they're satisfied after that watch after sitting for that 1 2 3 hours, why Hmm. would they want to give shit for it? Right. बहुत logical चीज है. sad यार. But having said that, fingers I think crossed. that is one lesson we all need to take here. कि eventually even we'll be at a place as creatives कि you know you either chase the money or you chase the art. You either वो die a एक hero. वो एक point पे आ जाएगा. And it's like that. This is one thing we both need to like. That's the as in, point, na? we Finding all a need to balance. remember exactly. More than just a balance, it's more like कि the more you chase the art, the money will come along because a good product will always find the audience. Right. And especially when it comes to a medium like films and stuff, like you know, when it comes to creating content on Instagram, the content is supposed to find the audience. But when you were talking about like these high budget things, movies, TV shows, there are people dedicated to sending it to the audience. Dedicatedly एक marketing team है. Dedicatedly चीजें हो रही है just so that it could reach an audience. So at the end of the day, when we're doing that, the whole our whole job becomes to just make a good product. And I think like that is something we all need to remember going ahead with our lives. Okay. Yeah. MCU, good talk on MCU, I guess. Right. चलो let's Next talk section. about Rocky and Rani. भाई नहीं पहले बवाल की बात करें. नहीं Rocky and Rani. Rocky and Rani, हाँ, ठीक है. भाई ग्रेट रिव्यूज ऑनेस्टली. मैंने नहीं देखी, सो कॉन्टेक्स्ट टू द Even ऑडियंस. I मैंने और haven't विगू ने watched. नहीं देखी, बट आमिर खान स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. तो And no one can stop talking. एंड I don't know. एंड नहीं देखी. आई वांट टू हियर व्हाई. मैं इधर नहीं था, मुंबई में नहीं था. आई वाज ट्रैवलिंग, so Yeah. maybe next week. I am not like growing up. I've never followed Bollywood इतना. I've always been this. कैंसिल हो जाएगा इधर. No offense, मतलब I'm not against it or anything. It's just I always have not been drawn towards it. But at the same time, अगर मितुल next week जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं जाके देख लूँगा. नहीं मैं अकेले जाऊंगा. तेरे साथ नहीं देखूंगा मैं. अच्छा मस्ती कर. बट मैं देख मेरा भी सिमिलर है. मतलब मेरे वो नहीं था कि मुझे देखनी है. मेरी एक लिस्ट होती है नॉर्मली कि ये मूवी तो देखनी है. उसके बाद मैं रिव्यूज का वेट करता. उसके बाद रिव्यूज अच्छा आते तो मैं जाता हूँ, वरना स्किप. हाँ, तो अभी रॉकी एंड रानी के रिव्यूज बहुत अच्छे थे. मेरी लिस्ट में नहीं थी, बट ऑल्दो आई हैड अ सस्पेशन कि अच्छी हो सकती है बिकॉज करण जौहर इज डायरेक्टिंग इट एंड his directorial films are good in मतलब catering to their times. मतलब K3G might not work right now or might not work भी नहीं बोलूँगा. The things it talks about or challenges या जो भी बात करें, it may again patriarchal society पे debate हो जाएगा. But I don't know about Rocky and Rani, but student of the year आदिल मुश्किल, those were अरे I feel it's his best, by far his best movie. So these were the movies. I mean, he has done good stuff basically. Yeah. तो चलो, having said that, आमिर क्यों बहुत अच्छी लगी तेरे को? Let's go. देख करण जौहर तो आई एम अ बिग करण जौहर फैन. मैं वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला बच्चा हूँ. Same. स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज माय DDL. Same bro, same. I love student. हाँ मतलब लोग कहते हैं गिल्टी प्लेजर, बट नहीं. हाँ उस टाइम पे मेरे लिए भी था. मतलब अभी भी है. हाँ बट हाँ अभी तो नॉस्टैल्जिक क्वालिटी के लिए, बट तभी जेन्युइन उस टाइम पे लेजिट अच्छा लगता था. एंड गिल्टी प्रेशर भी मैं तो स्कूल में जाके डायलॉग्स बोलता था तब उसके. Wow. उस लेवल. हाँ गो ऑन. तो हाँ, करण जौहर फैन तो मैं रहा हूँ. आई डोंट रियली लाइक कुछ होता है, बट K3G, फिर कल होना हो, ही हैड रिटन, ही वाज अबाउट टू डायरेक्ट, बट ये तो कल होना हो मुझे बहुत अच्छी लगती है. बहुत अच्छी. वेरी ऐसा न्यू जेन जी वाली मूवी है, अच्छी मूवी है. Student of the Year was good. My Name is Khan is really good, critically acclaimed, and ये सब कभी अलविदा ना कहना मिस करते हैं ना. सॉरी, वो मिस करने लायक ही था. ठीक है गो ऑन. फिर ए दिले मुश्किल, सॉरी बट आई एम अ बिग फैन ऑफ ए दिले मुश्किल. इवन आई लाइक इट. Very well made film. Now if I look at it, it has a lot of problems, but good film. उस टाइम देख, करण जौहर की मूवीज का एक रहता है कि even if they are not perfect as मतलब technical terms में इतना perfect नहीं होगा writing wise या, but they touch a heartstring. They emotionally make you feel something. They give you a emotional catharsis. And
रॉकी और रानी मुझे पता था कि बहुत एंटरटेनिंग मूवी रहेगी, बट आई डिडंट नो कि ऐसा इमोशनल जर्नी होगा मूवी में. मैं बहुत सरप्राइज हो गया था कि लोग इतना अच्छी बातें करे. राहुल देसाई gave it a good review and अनुपमा Oh, that's a भाई मैं तो achievement. पागल हो गया था. हाँ, वो तो अचीवमेंट हो गया फिर. बट व्हेन आई सैट टू वॉच इट, वही सब चीजें है. सेकेंड हाफ में वही मेलोड्रामा है, वही थोड़ा प्रीची भी हो जाता है सेकेंड हाफ में. तो इतना एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना. बट यार जो इमोशनल कैथारसिस होता है एक मूवी देखने के बाद, यू वांट कि यार यू हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी एंड एक यू फील फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर का आर्क खत्म हुआ है. You get to learn so many things from a movie. So many topics are touched in a film. Performances are on point. सब कुछ मेरे लिए हर एक चीज वो लोग ने perfectly सब कुछ perfectly वो लोग ने किया. टिक मार्क. And हाँ, तो मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. इमोशनली कैथार्टिक एक्सपीरियंस था. राइटिंग जो तीनों लोगों ने किया, शशांक खेतान इज वन ऑफ देम. शशांक खेतान जिसने हम्पी शर्मा एंड बद्रीनाथ एंड ऑल्सो धड़क उसने डायरेक्ट की थी. तो आई कुड सेंस कि धड़क में he did not have a lot of writing contribution. हाँ, अरे यार एंडिंग चेंज किया था भाई साहब. लेकिन उसके अलावा मतलब he's a good writer. हाँ, he's a good writer and he always wanted to he always wants to put forth new ideas. He always wants to put forth progressive ideas, new Gen Z के लिए and oldies के लिए new ideas बहुत अच्छे से बताता है. बट हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, नॉट हम्टी शर्मा की दुल्हनिया स्पेसिफिकली, बट बद्रीनाथ की दुल्हनिया, देन जुग जुग जियो एंड शानदार. Did he? जुग जुग जियो was. He didn't write those films. I'm just telling you कि ये जो 3 movies हैं ना प्रोडक्शंस के, so you could have a sense of कि कुछ नए आइडियाज बताने की कोशिश कर रहे, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे. बट देयर वाजंट अ सेंस ऑफ कन्विक्शन विद दोस फिल्म्स. मतलब बद्रीनाथ वाज फाइन. सेकंड हाफ में यू गेट अ बिट बोर्ड एंड इट डजंट फील परफेक्ट. मतलब कुछ तो एक Which one? बद्रीनाथ. I liked it. Same thing. हाँ, I also I enjoyed it. Yeah. एक परफेक्ट वाला फीलिंग नहीं आता. मतलब वो होता है ना कि सब नोट्स परफेक्ट है, वो वाला फीलिंग नहीं आता. एंड सेम गोज विद जुग जुग जियो. आइडियाज इतने अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस इतना अच्छा है, बट देयर इज मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है. there's a sense of incompleteness. बट ये मूवी में हाँ, बोल कुछ बोल. यार मुझे भी आई अग्री विद यू. आई गो मतलब मैं डीपली ज्यादा सोचूं ना, those movies जुग जुग जियो personally did not work for me because I did not क्या कहते हैं believe the world of it. मतलब मैं it was so caricaturous नहीं बोलूंगा, but it looked like a film, not real people talking, not real people being real people. मतलब again, that's my point. मतलब वो जो they try to strike a balance between the real world and those OTT. That is my hesitation with these films as well. Rocky and Rani में भी I fear that कि वो होगा, इसलिए fear नहीं, but I'm skeptical of that fact कि एक वो problem आ सकता है. That is why I'm थोड़ा concerned कि जाए कि नहीं. At the same time we'll also talk about Bawaal next इसके बाद, but Bawaal में भी I had this thing and it did disappoint in that sense. I don't believe in that world. I don't believe in the characters and everything is very stereotypical. Everything how you'd expect in a movie, Bollywood movie, वही characters है, वही world. चलो वो एक मेरा problem रहा है most movies से. बहुत कम movies. But you know, I heard, like, I was talking to someone and I heard this perspective where, like, as you said कि वो वही world है, वही world. It is something that people are wanting. Like, people want that now. नहीं. And that is why it works. I agree. Yeah. मैं वो बोल ही नहीं रहा. I तो totally agree. Exactly. See, अपने again that's a very different discussion to have. The problem is कि people want that. That's perfectly okay. But the problem is कि जब कोई filmmaker करने जाता है ना, he goes to strike a balance between the real world and trying to make it relatable and trying to make it over the top at the same time. नहीं होता. I was coming to that कि करण जो हाँ वो conviction था, पर वही that's the conviction कि you try doing everything and end up doing nothing. तो वो नहीं हो. I haven't seen the film, but go on. मतलब if you are making
an over the top world, if you are making a Karan Johar-esque world, then you go all out. You make the characters like they are in a Karan Johar movie, and in that sense, this is a very self-aware movie. Yeah. Right. Sorry, Amit. By that I mean world real लगना is not कि real अपनी दुनिया से real लगना. It's just कि जो movie में world है वो conviction से करो. Example Barbie ले लो. Barbie is the perfect example. It's a caricature. It's a satire. Yeah. And we buy it because they are doing it with complete conviction. So the same applies to, I hope, Rocky and Rani as well. Yeah. Go on, Amit. There are a lot of parallels that we can draw Barbie से. between Barbie and Rocky and Rani. But वही मतलब the topics that they covered might seem very. अबे एक तो यार cancel culture को जो इस movie में वो लोग ने बताया है ना, that I think मतलब hands down ये mainstream audiences के लिए जो best वो लोग ने पूरा sum up कर दिया. Cancel Interesting. culture. And I was really Interesting. happy. I was really happy क्योंकि एक तो performances are really good. Ranveer Singh, and chalo, it feels like the role was written for those characters, but those actors, but that is not the case. I saw an interview of Karan Johar today, and he really spoke at length about all of that. But it's the genius of those actors कि they delivered those lines and played those characters so spontaneously that it feels like the dialogues they have come up with the dialogues on the spot. And बहुत मतलब the acting, the performances and everything, all the characters are given their time to shine. And it may seem from a writing perspective, it may seem कि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है. You know, we are going from plot point to plot point, but there is nothing happening, and it's all just about वो Karan Johar vibe और Karan Johar feel में ही बस. So it takes 15 to 20 minutes to get into the film, but if you are into that world in those 15 to 20 minutes, then you'll have a good time. So. Yeah, but I also really like that Karan Johar was really being self-aware with this movie. There's a line, and this was also used by Rahul Desai in his review. There's a line in this movie which says कि सोच वही स्वाद नहीं. So they use this to describe some commercial or something, but it applies to this film itself. Karan Johar is trying to tell new things, and he's trying to poke fun at the things that he did wrong in his previous films. जो केकरी जी में एंड कुछ होता है में जो इलॉजिकल चीजें थी वो सब पे भी वो एक कमेंट्री या एक सॉर्ट ऑफ एक जोक प्ले कर रहा है एंड विद दैट ही इज ट्राइंग टू टेल अ न्यू स्टोरी एंड ट्राइंग टू गिव ब्रिंग न्यू टॉपिक्स टू द फोरफ्रंट और बहुत ही सर 2000s के मूवीज वाला वाइब है ये. Nice. Interesting. I had a really good time and वो इमोशनल catharsis again वो बहुत प्रीची हो जाता सेकंड हाफ में. आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट बट यार वही मजा वो चाहिए था बहुत टाइम के बाद एक ऐसा मूवी देखने में. तो हाँ, दिस वाज रॉकी और रानी. बहुत मजा आया. At the end of the day, it's just like as long as it feels good and enjoys और क्या ही फर्क. That's the point now. That is the point of movies. Yeah. Makes Why sense. not? Agreed. हाँ. Although बेका एक दो चीजें पूछना था. Karan Johar की movies में one thing that is out of the world is the music. यहाँ पे देख यहाँ पे थोड़ा वैसा वाला सीन है कि when you watch the movie and then you listen to the songs you get a better context of the song. And एक और चीज जो बहुत अच्छा मतलब करण जौहर को सब करने मिल गया इस मूवी में. उसको खुद के गानों का उसने वो तुम मिल गए नहीं तुम that was his song. तुम क्या मिल गए. पर उसका पुराना सॉन्ग है नहीं यार. तुम क्या मिले सॉन्ग का जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत सूरज हुआ मध्यम वाला उसमें पूरा वो उसने वो कर. Does it make sense in the movie though? हाँ, it makes sense. It's a normal generic Bollywood song यार. The guy is going they makes sense in a dream world. But उसके अलावा there is one more song called ढिंडोरा बाजे which has a very Sanjay Leela Bhansali-esque it sounds like colors and everything. Yeah. And it carries on. मतलब वो पूरा एक बड़ा एक sequence है मूवी में तो पूरे को एकदम ऐसा Bhansali-esque feel दिया है. And with that what he also did was कि सारेगामा के साथ उसने brand integration या whatever they have a partnership in this film. So what they have done is I won't reveal anything but they are using a lot of old songs in the first half of the film. तो वो ओल्ड सॉन्ग्स के साथ ना ये न्यू एक्टर्स हैव अ न्यू पिक्चराइजेशन. बहुत अच्छा लगा कि करण जौहर गॉट टू पिक्चराइज these songs in a new way in his own way. So it felt like उसके favorite गाने बचपन के गानों को लेकर he got a chance to show them again on the big screen. Interesting. तो वो बहुत ही innovative
इनोवेटिव से ज्यादा इट फेल्ट लाइक एक छोटे बच्चे को उसके सपने पूरे करने मिल रहे, वैसा वाला एक फीलिंग आया. you know, I kind of want to add to this. So sampling, this is sort of a music thing. मैं थोड़ा सा deviate करता हूँ topic for a minute. But this is a sampling thing which has going on in, like, it started off from the hip hop world. Then it came on to the whole thing, and then it came to the mainstream media, where they started, like, पुरानी चीजों का license लेके they start using it in new media, which was a very, like, मैंने Bollywood में इतना देखा नहीं था पहले, which I've started seeing a lot lately, and I like it. Because ये इतना, like, for me, again, I don't know the context to this, but at the same time, when you mention it, like, पुरानी चीजें लेके you're giving that child the happiness, I understand that feeling. And वो सुन के ऐसा अच्छा लग रहा है. Now it makes me feel like I should go watch the movie. मेरे को भी आमिर कन्विंस तो कर रहा है. Convince तो कर दिया आमिर. यार बट वही है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना. हाँ Oh, नहीं, that's fair. You'll have a good time. That's okay. Expectation Makes of Secret Wars. Secret Invasion से, sorry. War से भी थे, but fair थे नहीं enough. है. थे. अच्छा थे. चलो और कुछ थॉट्स आमिर रॉकी एंड रानी पे? नहीं, और तो कुछ नहीं. तुम लोगों को कुछ ऐड करना है करण जौहर के बारे में? करण जौहर के Karan, I think, see, one thing that मुझे हमेशा दिखता है उसकी फिल्मोग्राफी से is that he is ambitious. मतलब even K3G करेगा ना, तो he'll get every actor on board जो but again, as you said, conviction. I feel any director who has to succeed, although we are nothing abhi, but I feel conviction is the go-to. It should be the motto. मतलब conviction is you should believe in it first. मतलब खुद ही नहीं believe कर रहे और पूरे conviction से जा रहे हो तो अलग बात है. मतलब you are not first of all self-aware or you are not honest to yourself. If you are honest to yourself and if you feel it, it makes you happy. ये अगर ये तुम्हारे लिए एज एन ऑडियंस वर्क कर रहा है तो दूसरों के लिए करेगा. इवन हैविंग सेड दैट, तूने बोला ना कि ही गॉट टू डू एवरीथिंग, मुझे ना टैरेंटिनो का याद है. टैरेंटिनो में उसका लास्ट मूवी आ रहा है ना, द मूवी क्रिटिक. तो ही सेड कि वंस अपॉन अ टाइम इज हिज ग्रैंड फिनाले एंड हिज 10th मूवी, इट्स हिज फाइनल मूवी. ही इज ओनली गोइंग टू मेक 10 फिल्म्स. वो उसका एपिलॉग एंड आई फील ही इज गोइंग टू प्ले. He is going to go Tarantino. Yeah. And मुझे वो अचानक से thought आया, but coming back to this, it's like, see again, why do we watch film? Why do we make them? It's fun. So embrace it, na. And having said that, he has also gotten into films that are much more layered than surface level. मतलब My Name is Khan. कभी अलविदा ना कहना, मेरे को बिट्स एंड पीसेस में याद है, but I feel it was also he attempted a layered story. And student of the year देखा जाए, it's surface level पे very cheesy ये वो, but characters were written so well. Yeah, they were. So ऐ दिल मुश्किल preached, मतलब वो कुछ और डायरेक्शन में गया था. डायरेक्शन मतलब वन साइडेड लव, वो सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्वेश्चनेबल वो सब था, बट इट वाज फन. आई तो एंजॉयड इट. आई लव द म्यूजिक. उसके तो अभी भी गाने सब सुन. ट्रू. सो बट उसके अलावा भी करण जौहर हैज अ रियली गुड बिजनेस एक्यूमेन. मतलब उसका एज अ प्रोड्यूसर ही इज, आई डोंट नो, ही इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. एंड उसके अलावा आई कांट think of anyone else. Because Karan Johar has done everything perfectly in the last 5 to 6 years. मतलब कोविड के बाद भी उसने जो भी decisions लिए, everything up till now, he has done a good job. Brahmastra, be it he even co-produced Suryavanshi, which was meant to. I'm talking from a very general point of view. I'm talking from a industry का success के हिसाब से अगर देखा जाए, so Suryavanshi was opened the doors for movies and theaters to reopen and everything. So and even if you see his interviews, you should एक इंटरव्यू उसका अगर देख लिया ना भाई साहब, उसका एक सॉरी ऑडियंसेस के लिए मास्टर्स यूनियन पे उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू है. फिर उसका प्रोड्यूसर्स के 2 पॉडकास्ट है विद अनुपमा चोपड़ा. प्रोड्यूसर्स अड्डा में वो है. प्रोड्यूसर्स उसका कल ही रॉकी और रानी पे है, तो रॉकी और रानी मेरा वाकई उसने भी देखा. यू कैन गो एंड watch that as well. तो
you'll so in all the different interviews that you are talking about, it shows him as a good producer. मतलब क्या बंदे में कितना knowledge है, he knows so much about the audience, he knows the audience's pulse so well. But then when you see the Rocky or Rani wala interview, you see the really different side of Karan Johar. You see a very creative, a very filmmaker वाला side. मेरे को यार पहली बार फील हुआ कि भाई ये वही सब चीजें कर रहा है जो हम कर रहे हैं. What we are trying to do at this level. That's the balance now. See, when you are writing and directing, you can't be a producer. You shouldn't be a producer. You can't think like a producer. And that's the line you have to draw for yourself. मतलब and एक और चीज तूने जो प्रोड्यूसर के तूने बोला कि he has been the frontier of Indian cinema नहीं बोलूंगा, but he's always been there जहाँ पे कुछ अलग हो रहा है. Even Bahubali was he distributed it. मतलब got on board very early. Well, he saw the opportunity. See, one thing I don't know you can buy is the eye. Well, eye for good things. You can buy that. Well, it comes from experience maybe. But Karan Johar does have that eye, I feel. Having seen his work. See, there are going to be misses. And there are a lot of misses. Dharma ने बहुत अच्छी movies नहीं बनाई यार, fail भी गई movies हुई है. But having said that, knowing self-awareness कि ये रीजन की वजह से ये मूवी फेल हुई, लेट्स मूव, एंड दैट्स द आई फील मोटो. एंड इवन उसका बिजनेस, वन थिंग ही अगेन दिस फ्रेज इज बीइंग फ्लोटेड अराउंड सो मच, बट ही आल्सो सेड one thing कि it's not the movies that fail, it's the budgets that so being a producer he has that clarity which is I feel as film nerds or film whatever अपने को जो सीखना चाहिए लोगों से, दिस इज अ ग्रेट एस्पेक्ट. मतलब ट्रू. और हाँ एक और चीज ऐसा स्पेसिफिकली करण जोहर का जो ये वाला इंटरव्यू था ना, उसने बहुत ऐसा वैलिडेशन दे दिया है क्योंकि इसको आई आल्सो ट्राइड टू मेक अ रोमांटिक फिल्म. फिल्म लेंगे चलते रोमांस रोमांटिक फिल्म. तो व्हाट आई ऑलवेज थॉट कि रोमांटिक फिल्म्स को, बिकॉज लास्ट 3-4 साल या वो लास्ट डेकेड में जो भी वो रोम-कॉम्स बनाया ना ये धर्मा प्रोडक्शंस ने, आई कैन से कि एक में और एक टू वाज समथिंग डिफरेंट. बट देयर वाज दीस गोरी तेरे प्यार में, आई हेट लव स्टोरीज, वो स्टूडेंट ऑफ देयर 2, ये वाले सब जो जोन में थे ना, इट फेल्ट लाइक कि दे डिडंट हैव एनी थॉट और दे डिडंट पुट एनी थॉट इनटू मेकिंग राइटिंग द फिल्म. वो वाली जो बात आज मितुल ने कही है कि सेटअप एंड पे ऑफ, वो मैं भी बहुत वो फॉलो करता हूँ सेटअप एंड पे ऑफ वाला. तो वो उसके बारे में जब करण जोहर ने बात किया, ही स्पोकन, he went in so much depth. उसने हर एक कैरेक्टर का कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसका ये करना चाहिए था, इसका ये करना चाहिए था वगैरह. तो भाई ऐसा वैलिडेशन मिला कि भाई हाँ मतलब हम भी सही कर रहे हैं, हम भी वो सब जो इतना सोच रहे हैं. और उसका भी सेम चीज हुआ था कि he had a very long film, तो उसको काट के वो 10 मिनट काट पाया because everything was set up and pay off वाला. तो वो सब सुन के बहुत ऐसा मेरे फिल्म के लिए वैलिडेशन मिल गया कि हाँ ऐसा हो रहा है बड़े स्केल पे. तो हाँ मतलब इट फेल्ट रियली गुड कि करण जोहर भी he is still operating at that level वैसा. तो हाँ इंटरेस्टिंग. You also followed your instinct ना PNCC, तो कन्विक्शन तेरा, तो इसलिए मैं राइट. इवन मुझे एक इंटरव्यू सत्या का भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें मनोज बाजपेयी सेड वन थिंग कि one thing that they after the film succeeded, सबसे बड़ा फैक्टर फॉर हिम वाज दैट वैलिडेशन कि हम जो उस टाइम पे बनाते टाइम सोच रहे थे ना वो सही, मतलब उन लोगों ने कुछ किया नहीं था, हम लोग भी अभी वो स्टेज पे हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, बट वी आर ट्राइंग. तो वी आर ट्राइंग बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स, आवर कन्विक्शन, एंड व्हेन दैट comes through, if it does, and see that's the payoff you get कि हम उस टाइम पे we believed in us. So yeah, conviction. हम तीनों का सेटअप हो गया, पे ऑफ बाकी है. और अब कन्विक्शन के साथ बवाल के बारे में बात करते हैं. Conviction. See, that is when बवाल में मुझे conviction नहीं देखा, to be very honest. तुम दोनों ने नहीं देखी by the way? देख मैंने ट्रेलर जब देखा था ना, आई एम अ बिग रितेश तिवारी फैन, आई लाइक same एंड ऑल, बट यार छिछोरे वाज गुड, बट इट फेल्ट लाइक इट अगेन वो ऑर्गेनिक नहीं फील हुआ. बवाल की बात कर रहे हैं, छिछोरे की बात. छिछोरे you did not like छिछोरे? I liked I loved छिछोरे. I enjoyed it.
बट यार वो ऑर्गेनिक फील नहीं हुआ. इट फेल्ट लाइक Got it. मतलब एक कहानी बोलना Staged. चाहते हैं, Staged. wanted to, हाँ मतलब वो एक मैसेज देना चाहते हैं. Yeah. It felt very one dimensional in that way. But बवाल के साथ I felt this intrigue. आया था एक ट्रेलर देख के कि यार ये क्या. Does Vigu know about it? बताना चाहिए उसको कि उसको क्या बोलना. स्पॉइलर नहीं तो मूवी What देख बवाल लेना is मुझे. about? बता. हाँ तो आमिर मैं बोलूं. नहीं तू ही बता यार. मैं तो कैसे समझ. तो मैं आई गेस ट्रेलर में थोड़ा सी अगेन स्पॉइलर डिस्कशन है तो बताइए. Spoiler discussion doesn't matter. हाँ So- And there is a good chance I won't even remember it when I watch it. So नहीं तेरे लिए नहीं ऑडियंसेस के लिए. audience So- should have that approach. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. हाँ. So there is a history teacher in Lucknow who's going through a tough marriage, let's say, and to teach his kids about World War II, he goes to the places जहाँ पे World War II के battles हुए थे, and वो उधर जाके he has a character transformation. Basically, that's the Interesting. gist of. Interesting. मैं trying to keep it as basic and vague as possible. चलो, having said that, तूने I आधी मूवी really. मैंने क्या? आधी मूवी देखी बट मेरे को ये एक चीज बोल लेना थी कि विगू सुन के बहुत ऐसा इंट्रिगिंग लगा ना. बहुत ऐसा- हाँ हाँ तो माय ओनली प्रॉब्लम ट्रेलर देख के भी इट फेल्ट लाइक कि यार वो होता है ना अपने को कॉलेज में मूवी बनाने को बोलते हैं. हाँ तो अपन बोलते कि अरे हाँ अपन कुछ एक ऐसा मेटाफर या कुछ एनालॉजी बनाते कि भाई वर्ल्ड वॉर के साथ ये हो गया है. Film School 101. क्या मजा आएगा. तो इट फेल्ट लाइक कि ऐसा कुछ बड़ा कुछ ऐसा बिग कंसेप्ट करने जा रहे थे. बहुत ऐसा अनऑर्गेनिक नहीं, बहुत ऐसा स्ट्रक्चर्ड एंड मेड अप चीज लगा था. तो दैट वाज माय ओनली प्रॉब्लम. नहीं, आमिर ने जो बोला ना, दैट आर माय एग्जैक्ट सेम व्यूज. मतलब ही मिरर्ड माय ओपिनियंस. मतलब मैंने भी नोट्स बनाए भाई, मैं मूवी देखने के बाद नोट्स बनाने बैठा. बट हैविंग सेड दैट, आमिर बैंग ऑन. ये जो थीम्स और जो अपने बोलते हैं ना कि वो ये करता है, वो करता है, ये करता है, एंड क्या फैसिनेटिंग हुआ वैसा करके. आई थिंक द थॉट वाज राइट. मैं थॉट को मना भी नहीं बोलूं. दैट इज द थॉट दैट वन शुड हैव, कि वो खुद एक एम्बिशन है और उस एम्बिशन पे फैसिनेशन होना चाहिए. इट्स द एग्जीक्यूशन. इट्स द एग्जीक्यूशन में कन्विक्शन नहीं दिख. कन्विक्शन था, एक्चुअली में कन्विक्शन था भी थ्रू आउट द फिल्म. बट मेरे लिए प्रॉब्लम्स ये है दो चीजों में. ये ना, आई डिड नॉट बाय द वर्ल्ड और द कैरेक्टर्स ना लिखे अच्छे गए. एवरी कैरेक्टर हैज अ सेटअप एंड अ पे ऑफ, वो दिखता है. प्रॉब्लम इज क्या कहता है, जो कैरेक्टर्स है वो बहुत सरफेस लेवल, उनके इमोशंस बहुत सरफेस लेवल है. मतलब आई विल गिव थोड़ा स्पॉइलर कि वरुण धवन एंड जानवी कपूर का कैरेक्टर, दे आर मैरिड टू ईच अदर. They are not having a happy marriage because the girl has fits, seizures होता है उसको बार बार, and he's embarrassed to take her out of the house, मतलब दूसरों के सामने, because he is scared of his image. Although they've treated it very conviction के साथ, but very surface level. Human emotions are not this surface level. These are human emotions are meant to be more complex, etc. Yeah. एंड उसमें वरुण धवन का भी जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, feels forced. It feels कि वो स्टोरी को कैटर कर, उसका कैरेक्टर स्टोरी को कैटर कर रहा है rather than उसका स्टोरी उसके सॉरी हाँ स्टोरी उसकी एग्जैक्ट, इसका कैरेक्टर स्टोरी को कैटर करने के बदले उल्टा हो रहा है. Got it. ठीक है. तो वेट, did I say it? हाँ बराबर बोला. Yeah, One you more thing मेरे को सिर्फ जानना है कि एंड तक what did you think was the genre of the film? It was a sorry मेरी आवाज आ रही है. yeah, हाँ ठीक है, sorry. it was a drama comedy drama, that's it. हाँ कॉमेडी देख. They tried. हाँ मैंने आधी मूवी देखी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कॉमेडी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है. What should I feel? I'm not able to laugh in the comedy scenes. I'm not able to feel anything in the dramatic scenes. कुछ समझा ही नहीं कि genre क्या है. See, मैं तुमको थोड़ा स्पॉइलर और देता हूँ कि so what happens in the film is कि they go to the world war places. अचानक से they go to a different world. They read something and वो world दूसरे world में transform हो जाते हैं. They go back into the past. कि वो वहाँ पे है and उनके आसपास war हो रहा है. That's become such a easy trope right now. कि
you मतलब flashbacks दिखाने का बहुत easy way हो गया मेरे लिए. You know, when you said that कि to teach them, I thought you'll continue कि like उनको वर्ल्ड वॉर के बारे में सिखाने के लिए उसने वॉर कर दी. ये क्रिस्टोफर नोलन नहीं, नोलन होता करवान. हाँ भाई. I think that is the one thing he needs to do. Bum कर फोड़ दिया दिया ना Dunkirk. war. Real Dunkirk war wasn't a तो war नहीं. war. मतलब वर्ल्ड वॉर 2 पे मूवी थी बट वो रियल वॉर तो नहीं. बट अब Dunkirk again, was a very सिर्फ एक ही passive चीज war. सिर्फ एक ही चीज बाकी है उसका कि हिम टर्निंग 2 countries against each other. वही बाकी है नोलन. वरना वो वर्ल्ड वॉर 2 करा सकता. अभी देख उसने टेनेट में रशियंस वर्सेस अमेरिका करवा दिया. वो तो पर चले ही जा रहा है. हाँ. I think that is Anyways. everything. One Russian dude. But coming back to this Bawaal. Jokes apart. Yeah. Coming back to Bawaal, I feel tropes लिए गए ऐसा लगा कि ये मूवी see Ted, I also did the same. हमने जो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाया था ना, we did the exact same thing जो यहाँ पर. That is why it was a turn off. कि ये तो मैंने भी किया है. मतलब वो वाला मोमेंट आ गया कि कुछ नया नहीं था. नया नहीं था in the sense the way they showed it wasn't convincing enough and very exposition. They read something, they go into the world and they are transformed, right? And वो exposition is a huge problem in almost every movie. कि if you can handle the exposition वाला part, you are a lot of problems of yours are solved. So Bawaal में I think it was थोड़ा lackluster and at the same time character arcs were paid off. Let's say that उनके payoff जो थे setup जो थे उसका payoff मिला है. And although the world was very cheesy and caricaturish, but it is true to most Bollywood films. So although decent watch, not even a good watch to be very honest. I hope for better to be honest from Nitish Tiwari. Because Would you suggest again, it? No. I won't. You were saying something. I feel he has done such good work. Dangal was very layered. Was it surface level? Dangal ka world you believe. Yeah. It was very raw. Yahan ka world is not. I can't. Bhutnath Returns had a world very believable. He directed Bhutnath Returns. Really? I love Bhutnath. मैं 2 बार theater में देखा. I love that. So having said that, हाँ यार, that's my biggest gripe with the film. The guy who has made Dangal, जिसका world इतना raw और real है, वो ही same world it did not feel raw. Chechore maybe was beach में. It wasn't that raw and real. At the same time, it was not too caricaturish. मतलब it was थोड़ा in the middle, I guess. But thoughts on Bawaal? Yeah. ठीक है. तो एक बार तो देखना चाहिए. यार मैं वापस ना देखूं. But that is why I asked him, would you suggest it or watch? That is why I won't watch their better films जो तुम लोगों ने जो अभी है. Talking about better films, recommendations. There are better films जो audiences को भी देखनी चाहिए and हमको भी देखनी चाहिए. तो recommendations वाला part. मैंने इसको है ना इसलिए पूछा था because my consumption rate is very slow. इसलिए मैंने इसको पूछा would you suggest watching it? तो मैं देखूंगा. Although it's again having said that, you can learn from what they did not do perfect. Absolutely. It's not a bad film. See, it's not a bad film. वो मैं clear करूँ. It's not a bad film. It had ambition. It takes off not all the box, but a lot of boxes as well. तो वो मैं मना नहीं करूँ. But that's the problem. कि from going to great, it just remains at good. Mediocre. Yeah, mediocre. Although the scope of the story could have been something. Okay, interesting. Yeah. Also one more thing. I feel एक और चीज जो मुझे लगा कि थोड़ा isolated feel हुआ, मतलब in terms of कि फिल्म टारगेट किसको कर रही है. World War II आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में World War II see the same tropes if you take you could
टेल अस, आपको जो कहना है थीमेटिकली जो कहना है, आप वो वर्ल्ड किसी और चीज के अराउंड बिल्ड कर सकते हो. World War II is not very Indian, for example. By Indian I mean it feels foreign. It doesn't feel, it feels forced because of that. Do you think it was a language barrier? No, it's सब हिंदी में था. हाँ नहीं वही तो बोल रहा हूँ. So it's like as you say कि World War II is a very foreign concept, but फिर उसको हिंदी में बनाया. So do you think that is the problem? No. Okay. I mean a guy कल्चरली from, सिग्निफिकेंट कितना है वैसा. हाँ कि सी उनका ये था, द थीमेटिकली मूवी कहना चाहिए अबाउट द हॉरर्स ऑफ वॉर. Yeah. ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन ओपनहाइमर, या उसके पहले अपने हॉरर्स ऑफ वॉर के बारे में थीमेटिकली बहुत बात किया था हम लोगों ने. Yeah. तो बहुत सारी मूवीज कह रही है, आई फील इट्स अ गुड थीम. It गुड is. थीम नहीं, इट इज अ थॉट, वेरी थॉट प्रोवोकिंग थीम. अब उसके साथ वो थॉट आप कैसे ऑडियंसेस के माइंड में डालते हो, दैट वेज टू टेल. ओपनहाइमर आल्सो सेड द सेम थिंग, टू बी वेरी Definitely. ऑनेस्ट. यहाँ पे दे आर टेलिंग इन अ डिफरेंट वे. अब हॉरर्स ऑफ वॉर, आप वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, अभी ओपनहाइमर समझना इंडिया में आके कोई वॉर न्यूक्लियर बम बना, इट्स लाइक दैट. मतलब इट डजंट मेक सेंस ऐसा. अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन. The characters, although the story demands them to go to that places, that is, Interesting. Okay. the story demands them to go to that specific places, but जो रीड करके वो लोग दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू डिफरेंट वर्ल्ड, और वो जो मैसेजिंग है जो बोलना चाह रहे हॉरर्स, वो इट फील्स वेरी फोर्स्ड. मतलब वो ऑर्गेनिकली नहीं आता. Fair enough. तो I think this is a different genre from what like recent जो Oppenheimer देखा था. Like same Yeah. theme but different genres. Maybe you know. see, Jojo Rabbit, it is a comedy. Yeah. Yeah. It's a drama comedy, but it also speaks about horrors, of course, Yeah. and a lot of different themes as well. But see, that is my point. मतलब कि अपने ना genre and जो कहना है, it could be very different. Yeah. I mean, True. Very true. मतलब विल की बात करें अगर, फ्री विल की, ट्रूमैन शो ले ले, मैट्रिक्स ले ले, स्पाइडरमैन अक्रॉस द ये ले ले, Spider-Verse. different movies, very different Different. worlds, different movies, thematically same चीज क्या है. Yeah. True. Cool. Truman Show पे अलग कुछ करेंगे. Not yours. बात करनी है, I love that. Yeah. Same, one of same. my favorite. Not yours. Anyways, चलो. recommendations. Recommendation ना, आमिर चलो. जैसे मैंने ये वीक एस्ट्रॉइड सिटी देखा, तो मुझे Yeah. ज्यादा Would you movies recommend देखी. it? So what happened was I watched Asteroid City, which is a Wes Anderson movie, newest Yeah. Wes Anderson, latest Wes Hmm. Anderson movie. But I watched it specifically because it is not a great film, but उसमें जो मेटानेस वो लोग ने किया है. So we are basically watching a TV show जिसके अंदर they are showing a play, और वो उसके अंदर जो play चल रहा है, that is the movie. This is not a spoiler, but this is just the way the movie. हाँ, so it sounds very ऐसा, और बहुत ही interesting. Spoilers मत देना. हाँ. हाँ, बहुत Yeah. अच्छे से I don't want to hear spoiler for this one. मैं अभी And you देखूंगा. can go and give it a watch, but then I went back and watched Wes Anderson's first film, which is called Rushmore. मैंने पूरी नहीं देखी, लास्ट की 10 मिनट बची है, but it was a really good watch. बहुत ऐसा nascent stage पे हमने देखा वेस एंडरसन को, और I don't know, मतलब वो जो सिमेट्री वगैरह अभी यूज करता है, वो सब बहुत ही ऐसा नाइव स्टेज पे था तभी. मतलब it felt very raw, it didn't feel like a Wes Anderson movie, but it had the colors and it had some shot taking and camera work like in a Wes Anderson movie. So I would recommend Rushmore to all of the Wes Anderson fans and anyone who wants to get into filmmaking. Your favorite Wes Anderson movie? मैंने ज्यादा देखी नहीं. मैंने I Love Dogs, Fantastic Mr. Fox, I really like that. Grand- I haven't watched Grand. मैंने ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 3 बार शुरू किए, तीनों बार आधी देखी. I couldn't sit Same. through it. Couldn't I sit love through it. it. बहुत अच्छा. For some reason, I- couldn't sit through it, dude. I don't know why. कोई नहीं, makes sense. Vigu? हाँ चल विगू. Honestly, after Barbie and Oppenheimer, I haven't watched anything. Except. So there are like two things. मेरे को like when I sit to eat, I need something to watch. And the go-to, don't judge me or don't be surprised. Sorry. Be neutral. मेरे को लगा खाना recommend करने वाला है. It is officially a food blog, guys. मितुल ने बोल दिया. नहीं, 1 मिनट, तू बोला ओपनहाइमर और बार्बी के बाद कुछ देखा नहीं. सीक्रेट इन्वेजन का फिनाले देखा था. That is TV, right?
तो मैं वही तो बोल रहा था, मैंने recommend मूवीज कर देखी सकता नहीं है। है। हाँ, मैंने मूवीज देखी, आई वाज कमिंग सीक्रेट इन्वेजन नहीं, कभी नहीं नहीं रेकमेंड वो बात कमिंग टू कमिंग टू लाइक, हाँ तो खाते खाते क्या देखता है बिगू? Family Guy. I अरे officially finished Family Guy's 21 seasons, all episodes yesterday. बाप Can you imagine the dedication? कितना सीजन है अभी फाइनल? 21 seasons है. Next season आ रहा है सितंबर में. है, अभी भी चालू है। अरे चल रहा है ब्रो, नेक्स्ट 2 सीजन साइन कर दिया. बट वही बंदा लिखता है अभी सेम, सेट में। आई डोंट नो, सेथ राइटर्स का पता नहीं मैकफार्लेन, है. सेथ मैकफार्लेन। राइटर्स का पता नहीं है. आई लाइक इट फॉर द डार्क जोक्स. नाइस। Let's not discuss that here. But उसके अलावा I am very close to finishing Breaking Bad. या इवेंट तूने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा? मैं बोल रहा हूँ मेरा कंजम्पशन रेट बहुत स्लो है. बेटर कॉल सॉल मैंने भी पहला इसके बाद That is the next thing. That is the तूने next नहीं देखा thing. आमिर? ब्रेकिंग बैड नहीं देखा? हम लोग अपना अरे मैंने ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सब जो ए यार, क्लासिक देख अभी आमिर ने बोल दिया, आमिर रिकमेंडेशन ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स. यार मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स 2 बार देख लिया. मैंने उससे ज्यादा बात है, बट ठीक देख पटेल सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है इधर. है। हाँ ठीक है और मिथुल क्या रेकमेंड करें? यार मैं भी कुछ और कंट्रोवर्शियल बोलने वाला हूँ कि मैंने अब तक वो 2 मूवीज देखी नहीं थी, किल बिल दोनों वॉल्यूम्स मैंने अब तक नहीं। तू पहली बार देख रहा था? तो कौन सी ज्यादा पसंद आई? फर्स्ट पार्ट वाज मोर एंटरटेनिंग, सेकंड पार्ट हैड बेटर कैरेक्टर वोकाइट्स. Okay. बिल का कैरेक्टर आई लव्ड, इवन क्या कहता हूँ, वो जो पूरा वो Bride's character. सुपरमैन वाला सीन है, वो सुपरमैन हाँ? के बारे में बात करता है, सुपरमैन के बारे में बात वो करता तो है। अरे वो सीन, इट्स इज क्या कहते हैं, कमेंट्री ऑन ह्यूमंस वाला ना, हाँ, ब्यूटीफुल. मतलब उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो एसेस देखे. पीपल दे वो बैकफायर तो थोड़ा किया था उस पे, बट वेरी वेरी मतलब क्या कैरेक्टर है बिल का. बट इंटरेस्टिंग. ब्यूटीफुल मूवी. हैविंग सेड दैट, बोल मेरे को कुछ बोल. I do have a recommendation actually. बोल. Have you guys watched this film called I think it is called Martyrs or The Martyr. I think सुना that मैंने. is how we pronounce it. It's Martyr. spelled like MARTY. मार्टर Yeah. You've शहीद. देखिए तूने? नहीं मार्टर का मतलब ये होता कौन था सी शहीद. मूवी अच्छा, है भाई? अच्छा. मैंने सुनी भी नहीं। It's काफी, it's not a recent film, but I was talking to someone about it and भाई उसका ending, it's a horror movie by the way. I don't know if you're into horror. I am a lot. मार्टर या मार्टर्स? एस S 2008 की फिल्म है. गॉट इट. ये वाइनस्टीन कंपनी ने बनाई है, हार्वी वाइनस्टीन. Okay. नई कॉन्टेक्स्ट Oh. उनको. So like the problem with this is कि it is not something that everyone I would recommend to everyone because एक तो horror है. Secondly, it is human horror. There is a lot of torture and all that going on. And the ending is I don't even know what to comprehend of it yet. Like मेरे को नहीं पता. Ending तुम देखो. ओपन एंड वाला है कि Open end मतलब अलग ही level का open end है. अलग ही level का. मतलब कुछ समझता नहीं है वैसे मुझे. Sorry. वैसे ही Do you मदर want to go and watch मदर देखिए तुम लोगों ने ना, explanation No. मदर देखिए, उस लेवल का ओपन एंड है. ओपन एंड नहीं, पर उस लेवल का कुछ समझ नहीं आने वाला. क्या So पर it's मदर like में तो समझ see आता ऐसा है. नहीं है कि समझ में आता है, नहीं बट आता. क्या हो रहा है विजुअली एक मिनट, वाला. बॉन्ग जून हो वाला कि ये वाला? अरे अपना अपना मदर एरोनॉफ्स्की. एक्सक्लेमेशन. हाँ, एरोनॉफ्स्की वाला, एरोनॉफ्स्की. उसमें क्या समझने जैसा था? पर If वही you are into तो horror, I would recommend it. अच्छा, बट एक मिनट तो मतलब कुछ they don't conclude everything in the end, they just leave it. The ending is more philosophical than answering. Like तू वो thought में घुस जाएगा and you don't. Again, it's the sort of a similar feeling like Oppenheimer. You don't know what to think or feel. But How do we to- get a okay. payoff at the end? Sorry. Story gets concluded and do we get a payoff? Story conclude हो जाता है, but the idea Thematically. behind it, thematically, it's पूरा interpret करो, तुम सोचो, go back home and think about it. Cool. If you're into all of that stuff, it'll be a fun watch. एक और रिकमेंडेशन. ऑल्दो 2 साल हो गए, बट आई फील इतने लोगों को पता नहीं है. तब्बड़. इट्स अ ब्यूटीफुल शो. What? TABBAR. Okay. इट्स ऑन सोनी लिव. Okay. इट्स मेरे हिसाब से टॉप 3 इंडियन शोज ऑफ ऑल टाइम. What 1 2 पे क्या है?
पाताल लोक एक है। अरे तेरे को कैसे पता पाताल लोक तो यार फाइनेस्ट शो है इंडिया का। हाँ, अरे उस लेवल का है, क्या उस लेवल का है तब। और सेकंड कौन सा है टीवी शो? मैं टॉप 3 में बोला, अब तीसरा मुझको भी नहीं हुआ, पर टॉप 3 में आता है कहीं तो। बहुत But- डार्क शो है ना कौन सा? तब्बर। Yes, it has a very similar plot to Drishyam, let's say. A father Okay. going into extremes to save his family or something like that. So, Got it. and it's a very perfect show. Matlab, very close to perfect. It gets everything right. It has great characters. Writing is impeccable. Performances are amazing. Production design बहुत अच्छा है. And you believe in that world. Tabbar is one of the most underrated. मैं इसलिए बोल रहा हूँ because I don't think people have heard of it. Even I did not. No, मतलब people have heard of it. It's pretty known. 2021 का इसलिए, एंड उस लास्ट में हाँ, पर इवन पर्सनली बता तो मुझे भी बहुत बाद में पता चला 2021 के हिसाब से। सो वेरी इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज इंडिया से। Interesting. ठीक है कूल मैं यार, note कर लिया। चलो यार कंक्लूड करें। करते हैं। चलो आमिर आउटरो दो। यार मैं नहीं कर रहा यार conclude. बस इस पे काटता हूँ, इस पे काटता हूँ, मैं नहीं कर रहा। यार मैं नहीं कर रहा।